Okay, so great evening once again and welcome all on the wonderful occasion, Foundation Day of Bhabad International Publication. It's the first Foundation Day. तो हम सब ने प्लान किया था कि ऑफलाइन इवेंट करेंगे काफी अच्छा, पर कुछ इनिशिएटिव सोशल इनिशिएटिव्स को लेके मेंटर्स ने कुछ प्लान किया है, तो आप सबको एंड में बताएंगे भी कि क्या एग्जैक्टली प्लान हुआ है। और आप सभी लोग अब तक जो क्रिएटिव प्राउड फीलिंग के साथ एबीसीडी के साथ जुड़े हैं या पब्लिकेशन के साथ जुड़े हैं, तो एंड में आपको वो पता चलने के बाद और प्राउड फील होगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ डेफिनेटली। और आपकी सेवा का मौका दिया इतने दिन तक, उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। कुछ चीजें डेफिनेटली होती है आगे पीछे, पर उसको भी जल्दी से रिजॉल्व करेंगे। बहुत सारे सिस्टम पे काम चल रहा है बैक एंड में, तो डेफिनेटली अगला जो साल होगा ये पेट्रोल नहीं भरी या हम जो लेके आएंगे काफी अच्छा रहेगा। एक और चीज यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, तो फिर अभी कि अभी जो नया साल हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी आगे जा रहे हैं, तो आज कुछ सेलिब्रेशन का मौका था। बहुत सारे ऑथर्स को सबको बताया था, पर जिन जिन लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया है, तो उन सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी की वजह से ही एबीसीडी एक साल सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। तो पहले कुछ था नहीं, आप सभी को पता है, आप सभी उसका गवाह है कि कुछ भी नहीं होने के बावजूद भी हम सब इतना कुछ कर पाए हैं। तो डेफिनेटली ये सब आपकी वजह से है। सो ऑल क्रेडिट टू यू ऑल ओनली एंड आवर कोर टीम मेंबर्स, मेंटर्स। सो सभी का फिर से एक बार धन्यवाद। और विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम, लेट्स वेलकम आवर ममता मैम। सो वेलकम मैम, ओवर टू यू। एंड उसके बाद फिर हम गेस्ट को इनवाइट करके आगे का प्रोसीड करते हैं। प्लीज। Thank you so much. Good evening to all of you, and I really am feeling honored to welcome you all the respected authors on this particular platform today. और आकाश जी, आपकी बातों को मैं अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करूं तो मैं कहूंगी कि कामयाबी की एक खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर खुद ब खुद पैदा हो जाती है। इसलिए हमें कामयाबी तो मिलनी है, इसमें कोई शक नहीं है। Right? Before starting the summit, as usual, I would want us all to know Mr. Aakash Bhabad. वैसे हम सभी उनको पर्सनल लेवल पे काफी हद तक कनेक्टेड हैं, फिर भी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट हिम. As we all know, Mr. Aakash Bhabad is a very young and dynamic professional leader. He leads by an example. He is 5 world record holder. Mr. Bhabad has penned 4 books, and all 4 books of his are available on Amazon and Amazon Kindle. The first book is 20 Essential Habits for Success. Indeed, it should be very interesting. The second is 5 Essential Qualities for Success. Third book is Nothing Too Extraordinary, very catchy topic indeed. And the fourth is 7 Days Book Writing Blueprint. His 4th book is #bestseller on Amazon, and we are really proud about it. As a trainer, he conducts 21 days workshop on habits and International Authors Success Coach Certification Program. Mr. Aakash Bhabad helps authors to write, publish, and brand their books. He works on various strategies with authors. He guides authors to know them, to make them know how to use book as a business booster tool. He helps organizations, schools, colleges, universities, corporates, and individuals to set world records through training and book publication. Mr. Bhabad is a business booster coach for trainers, coaches, and mentors. He helps them to grow their training business and provide trainings and platforms to them to explore themselves as well as for the surrounding. He organizes various international business summits where trainers from various countries participate and share their knowledge and experience. This we all are also doing the same over here on this particular platform. Mr. Bhabad is CEO of ABCD International Family and Bhabad International Publication, and he is a certified life NLP and business coach. So this is all about our dear Mr. Aakash Bhabad.
And then let us know about ABCD International Family too. ABCD International Family is one of the best training consultancy who provides various training programs like Train the Trainer, Life Coach Certification, Corporate Training, Business Coaching, and many more. As you all know, ABCD International Family already conducted 10 plus virtual international summits, 100 plus free webinars on various topics, and 10 batches of their signature program, which is known as Train the Trainer. From January 2022, ABCD International Family started a great platform like ABCD International Talks. This is something like TED Talks type of thing. On this platform, various successful people share their journey, experiences, skills, strategies, knowledge, ideas, life story, and success principles to inspire the world. Today, ABCD International Family is associated with different trainers and educators from more than 25 countries throughout the globe, and the journey still continues. About Bhabad International Publication, we all know that it is one of the fastest growing publication company in India who always focuses on how to create success stories of various authors. They help people to write, publish, and brand their own books. USP of Bhabad International Publication is that they publish all books in world record events or in grand offline events, or they create some logic and the author's book becomes the part of the world record. I always call Mr. Aakash Bhabad is a man who creates magic with logics. And that is what he does with ABCD Publication. Bhabad International Publication published 50 plus books in just 8 months and contributed in 150 plus author success stories, and the journey is still continuing. It is one of the fastest growing publication, which in just 22 days had become the world record holder organization. It helps, it also, it publishes various books like ebooks, paperback, hardcover, audiobooks, video books, etc. also. And it guides how to use the business, how to use the books as the business tools. It is also, I'm sorry about it. Bhabad International Publication work on book writing, publishing, and branding workshops from 5th standard level to PhD level and onwards. The objective behind workshops is to empower and transform authors and their work. Bhabad International Publication is currently working in 11 plus countries, and they have 100 plus brand ambassadors throughout the globe. Journey is still continuing and the expansion is always in process. So this is all about the organization as well as the CEO of the organization. And I welcome you all authors on this particular platform. I feel that the greatest creativity lies in being an author, because when I enter into a room and I see a good book kept somewhere, I automatically start feeling learned myself. And there is a sort of some sort of holy feeling comes into it. So I respect all of you and welcome you here on this particular platform. Over to Mr. Aakash. Yes, thank you, ma'am, for the wonderful introduction. आज तो इंट्रोडक्शन का डे नहीं है, फिर भी एक फॉर्मेलिटी के हमने सब ऐड किया था. तो आज सबका सेलिब्रेशन का डे है. ऑफ कोर्स आप सभी लोगों को सुनने के लिए हम यहाँ पे आए हैं. So thank you once again, ma'am. Okay, so today we have one more guest also. तो आज हम उनका बुक लॉन्च भी है, वर्चुअली हम उनको इनवाइट करेंगे, उनका बुक लॉन्च होगा. मैं ममता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा बस वो जो पोस्टर है वो आप शेयर कीजिए मैम, जब वो उनको इनवाइट करते हैं. और मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के गेस्ट डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर को. वो फाउंडर है आनंद श्री ऑर्गेनाइजेशन के, इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर आल्सो, और ऑथर भी है. हम सब ऑथर से उनको इनवाइट करने के पीछे एक और रीजन ये भी था कि वो खुद अपना बुक लॉन्च भी करना चाह रहे और ये उनका 20वां किताब है.
उनका 20वां किताब है। तो हम अगर सभी ऑथर से उसी फील्ड में है और उसी के रिलेटेड इवेंट है, तो ऐसे गेस्ट को इनवाइट करना ऑफ कोर्स जायज है। तो लेट्स वेलकम डॉक्टर दिनेश गुप्ता सर। सर, welcome on this wonderful platform, and thank you very much, sir. Thank you very much. Yeah. Yes, sir. Am I audible, sir? So, yes, audible, sir. Yeah, welcome. बहुत सारी शुभकामनाएं सर. Really, sir, God bless you, sir. Today you have completed your company publishing house has completed 1 year. बहुत अच्छी लग रही है कि हम जैसे नए ऑथर जो है, हम जैसे जो सीख रहे हैं, जो अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, छोटी मोटी बातें कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप प्लेटफॉर्म दे रहे हैं. सर, मैंने आपको ना ग्रो होते हुए देखा है. अगर आपके ऊपर कोई किताब लिखेगा ना सर, तो मेरे इंटरव्यू के बगैर आपकी किताब पूरी नहीं होगी, ऐसा मैं मानता हूँ. हमने आपको सर एकदम जब एक ग्रोइंग स्टेज में जब आप मुझे मिले थे ताजमहल होटल में. हर पर्सन का एक ड्रीम होता है ताजमहल होटल, और ताजमहल होटल जो कुलाबा में है, गेटवे ऑफ इंडिया के सामने है, वहां पर आप आए थे सर अवार्ड लेने के. और पहली बार मैंने आपको देखा था, जो आपके अंदर सिंप्लिसिटी है. वहां पे हमारे एक ट्रेनर थे, वो भी आपकी बहुत सारी तारीफ कर रहे थे, और इतने बड़े होटल के अंदर आपका सम्मान किया गया. और वहां से जो आपकी जर्नी शुरू हुई है सर, एबीसीडी इंटरनेशनल के माध्यम से, अभी पब्लिशिंग हाउस है, अभी आपकी और भी नई परियोजना है. और सबसे बड़ी बात है सर, व्हाटएवर आई ऑब्जर्व दैट, कि सर आपने सिर्फ ये महाराष्ट्र मुंबई तक सीमित नहीं रहे. जो सबसे बड़ी जो आपकी ताकत थी, दैट इज योर एक आपका जो प्लस पॉइंट है, दैट इज योर नेटवर्किंग. ये नेटवर्किंग को जो आपने हथियार बनाया सर, नेटवर्किंग के माध्यम से आपने इतने लोगों को एक मैं देख रहा हूँ, सुलभा मैडम है, प्रीति मैडम है, प्रीति शर्मा मैडम है, डॉक्टर रितु गुप्ता मैडम है. मैम, बहुत बहुत आपको आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद. आपकी किताब मेरे पास है, और बहुत अच्छी किताब आपने लिखी थी. वो उसके अंदर की एक लाइन थी, वो लाइन पढ़ के मेरी मिसेस रोती है. उसमें लिखी एक बहुत अच्छी लाइन थी, डॉक्टर रितु गुप्ता जी सर. हर लड़की प्रिंसेस होती है, हर लड़की प्रिंस होती है, प्रिंसेस होती है हर लड़की. एवरी गर्ल इज प्रिंसेस, नॉट बिकॉज ऑफ शी हैज प्रिंस, बिकॉज ऑफ हर फादर इज किंग. यस सर. ये लाइन जब मैं पढ़ा, रितु गुप्ता मैडम, जब किताब आकाश सर ने आपकी किताब को लॉन्च किया है, तो मेरी मिसेस रोने लग गई. चलिए, तो अभी मेरे सामने बैठी है, वो सामने ही बैठी हुई है अभी भी. तो वो ये ताकत है, ये शब्दों की ताकत. और ऐसे ताकतवर लोगों को हमारे डॉक्टर ही निकल रहा है. मुझे लगता है कि बहुत जल्दी शायद आकाश सर को डॉक्टरेट भी मिल जाएगा, क्योंकि इतने लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहे हैं. और कहते हैं ना कि जो देखिए, दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं वो सिर्फ लेते रहते. जो ले रहे हैं ना, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, यानी वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, या अच्छा तरह से जी रहे हैं. लेकिन जो देते हैं ना, वो अच्छी तरह से सो रहे हैं. दे कैन स्लीप वेल. तो आकाश सर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है आपके शुरू से जर्नी में, साक्षी मैडम आपके साथ है. आपके पूरे प्रोग्राम को साक्षी मैडम ने कंडक्ट किया था, क्योंकि आपके 2 प्रोग्राम में मैं जा चुका हूँ. दो प्रोग्राम में मैं जा चुका हूँ. मैंने 2 प्रोग्राम आपके देखे हैं, जहां पर मैं खुद प्रेजेंट था. वो भले वो की शुरुआत जैसी भी हुई थी, लेकिन आपकी यात्रा बहुत लंबी है सर. कहते हैं ना, अगर आपको कहीं थोड़ी दूर तक जाना, यू कैन गो अलोन, बट इफ यू वांट टू गो वेरी लॉन्ग प्लेस, यू हैव टू गो टुगेदर. और आप इतने सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं. सुनीता मैडम है, सुनीता मैडम की भी किताब मैंने पढ़ी है. और काफी यानी उस इवेंट में ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोगों की किताब मिली थी. मैं पुणे में सर के साथ गया हुआ था. सर का एक प्लेटफॉर्म है, एबीसीडी टॉक है सर. तो कितने सारे प्रोडक्ट सर आपने लॉन्च किए हुए हैं सर. कितने सारे प्रोडक्ट आपके बने हैं सर, जाने अनजाने में. तो और मैं देखता हूँ कि जो मेरी एक लाइन है, हमेशा मैं कहता हूँ और हर प्लेटफॉर्म पे कहता हूँ, वो जो स्टॉक होने दीजिएगा, टेडेक्स स्टॉक होने दीजिएगा. अभी दूरदर्शन में जाने का मौका मिला, तो मैं हमेशा कहता हूँ, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए. तो मैं आपको यही शुभकामना दूंगा. आज आपका जो आज 1 साल, ये 1 साल बोलते ना, द लॉन्ग 1000 miles जर्नी स्टार्ट्स विथ 1 स्टेप.
और एक लाइन बोल के मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। मुझे पता है बहुत सारे अच्छे स्पीकर है, मेरे से भी अच्छे स्पीकर यहाँ पर मौजूद है, और बस एक ही कहना चाहता हूँ आकाश सर आपके लिए, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन दोस्तों, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद। Thank you. Great word, sir. Great word. Dinesh sir, I would like to add one thing. Very firstly, I'm very happy to see you because after the Mumbai event, I just meet you right now. And, it's a great inspiration, sir. I also, launched my first book. होता है ना, सबको अपना पहली चीज बहुत प्यारी होती है. I know under the publication of Aakash sir. So a big thank to Aakash sir. And Dinesh sir, I really want to meet again. हम लोग फिर शायद किसी ओकेजन में और एक आविष्कार करने के लिए साथ जरूर जुड़ेंगे. Thank you. धन्यवाद. यस, थैंक यू मैम. सो लेट्स आगे की ओर बढ़ते हैं. तो सर का आज बुक लॉन्च था, तो उन्होंने एक किताब लिखा है, स्मशान भूमि पर चाय, सॉरी. तो मैं बस उसका शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर, और सर को फिर से एक बार इनवाइट करता हूँ 2 मिनट कि आप अपने बुक के बारे में शेयर कीजिए. जस्ट शेयरिंग 1 मिनट. I think it's visible. Yes. Yeah. Yes, And sir. congratulations, sir. Yes, sir. Please share 2 मिनट में आप अपने किताब के बारे में, उसका क्या जर्नी, वो किन लोगों के लिए है, क्या उससे आप मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज शेयर. मेरी एक कंपनी है, हम लोग कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं, जीरा सोडा बनाते हैं, हम लोग की एनर्जी ड्रिंक कंपनी है, एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं. उसके अंदर नाटाडी कोको हम डालते हैं. उस शरबत के अंदर लोग नाटाडी कोको जो मलेशिया से आता है, और मलेशिया से ये आता था जालना में, और जालना से मुझे लेने जाना पड़ता था. मैं कभी जाता था या मेरे एक पर्सन जाते थे. एक दिन एक पर्सन नहीं था, तो मैं चला गया था, और जहां पर वो माल उतरता था, यानी बस से जहां पर माल आता था, तो वो एक बस स्टॉप था. वो बस स्टॉप के पीछे एक शमशान भूमि थी. तो मैं सवेरे 4 बजे वहां पर पहुंच जाता था, वेट करता था बस आएगा, और वो पूरा बॉक्स हम लोग वहां से कुछ ओला करके हम लोग घर पे लेके आते थे, मैं और मेरा लड़का, हम दोनों जन जाते थे. और वहीं पर वो कल्पना बनी थी, क्योंकि सामने एक चाय की दुकान थी. आकाश सर, एक सामने चाय की दुकान थी, राजवाड़ी चाय. तो मैं राजवाड़ी चाय पर जाता था चाय पीने के लिए. ऐसे 2-3 बार मेरे साथ हो गया. वो चाय पीते पीते कुछ ऐसे अलग सी फीलिंग, पता नहीं क्या ऐसा फीलिंग आती थी कि एक कल्पना वहां पर आई कि अगर यहाँ से लोग अगर जिंदा हो गए और कुछ मैसेज देना चाहते हैं वो जिंदगी के बारे में, वो क्या मैसेज देंगे. शमशान भूमि पर चाय, और मैं चाय पीते पीते ना उस धुएं के अंदर मुझे कुछ आकृति दिखाई देते थे. ये सब काल्पनिक है, ऐसा कोई रियल में नहीं है, नहीं तो आप ऐसा बोलेंगे कोई भूत वगैरह कुछ नहीं होता है. बट ये कहानी शब्दों के माध्यम से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली लाइफ. बहुत से लोग साहब जिंदगी को बिता रहे हैं, और बहुत से लोग जिंदगी को लीजेंडरी बना रहे हैं. आकाश जैसे सर जो है, ममता जैसे मैडम है, सुनीता मैम है यहाँ पर, ये लोग लीजेंडरी है. ये अपनी जिंदगी को कुछ नया दे रहे हैं. मोहम्मद सिराज सर है, निजदीप जी है, सामिया अजफर जी है, शुभा जी है, सुनीता सिंह मैडम है, डॉक्टर रितु जी है. तो यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, ये अपनी जिंदगी को लीजेंडरी बना रहे हैं. तो ये अगर कोई पर्सन है, वो जब जिंदा होके वापिस आएगा तो वो आपसे क्या कहेगा. तो वो चाय पीते पीते, वो चाय थोड़ी सी चाय रहती थी, आधे घंटे की, उसमें हम लोग, मैं और मेरा लड़का भी रहता था. लड़का तो चाय नहीं पीता, लेकिन मेरे साथ वो रहता था, कंपनी देता था, आलोक नाम है उसका. तो उस समय कल्पना जगी. फिर एक कॉलेज में मैं लेक्चर देने गया था, उस दिन मेरा लेक्चर नहीं हुआ. आकाश सर, उस दिन मेरा लेक्चर नहीं हुआ. तो मैं वहां पर बैठ के डायरी और पेन, मेरे पास बैग में हमेशा रहता है डायरी और पेन. मैंने डायरी निकाला, पेन निकाला, और जो अनुभव मुझे मॉर्निंग में होते थे 6:30 बजे, 5:30 बजे, 3:30 बजे, वो मैंने लिखना शुरू कर दिया. कॉलेज में बैठ के मुझे लगता है कि कुछ
8 घंटे का टाइम मुझे मिला, 8 घंटे में किताब पूरी क्लियर हो गई। तो लाइफ के जो 3 मैसेज है, 3 महत्वपूर्ण मैसेज है कि हमें जिंदगी क्यों मिली है, हमें जिंदगी क्यों मिली है, हमें जिंदगी कैसे जीनी है, और जिंदगी के बाद की जिंदगी को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। सुपर सुपर। ये थ्री मैसेज इस किताब के माध्यम से, जो आज एबीसीडी के माध्यम से, भाभड़ पब्लिकेशन के माध्यम से जो रिलीज हो रही है, ये 3 मैसेज हर कोई लेके जा सकता है। और बहुत जल्दी किताब आपके हाथों में भी आ जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। किताब टाइपिंग वगैरह हो चुकी है, कवर, आईएसबीएन नंबर सब कुछ आ गया। मैं सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रकाशन जो महोदय, हमारे आकाश भाभड़ सर का, कि सर आपने हमारे किताब को इतनी अच्छी एक मौका दिया हम जैसे नए कलाकार को। मैं 2006 से लिख रहा हूँ, नहीं सर, और ये 20वीं किताब है। और एक मैंने प्रण किया था बीच में 100 दिन में 100 किताब लिखने का, तो उस पर फिर मैं कभी बात करूंगा। आज सिर्फ इतना है कि आज इस किताब पर मुझे बात करनी है। और जब भी कुछ मौका मिलता है, देखिए 2-3 काम तो हर इंसान को करना चाहिए। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से रॉबिन शर्मा इज सेइंग दैट एवरी पर्सन मस्ट डू दी 3 वर्क। एक पेड़ लगाकर जाना चाहिए। दुनिया छोड़कर जा रहे ना, तो एक पेड़ लगाकर आपको जाना है। यू हैव टू ग्रो 1 ट्री। कहीं पर भी एक पेड़ लगा दीजिएगा, बस कहीं पर भी। दूसरा, एक नया जनरेशन देकर जाना है। आपको एक नया जनरेशन देना है, आपको कुछ भी करके एक नया जनरेशन देना है। या तो किसी को अडॉप्ट कर लीजिएगा, या तो बर्थ दीजिएगा, लेकिन एक नया जनरेशन आपको देके जाना है। और तीसरा, आपको एक किताब लिखकर जाना है। दुनिया छोड़ने के पहले कम से कम एटलीस्ट यू मस्ट राइट 1 बुक। एक बुक के आप ऑथर होने चाहिए, और उसकी अपने जिंदगी के बारे में बताइए, आप कैसे कैसे अपनी जिंदगी जिए। जैसे मैंने डॉक्टर रितु गुप्ता जी के बारे में बताया कि उनकी एक लाइन ने, यानी सोचिए, शब्दों रुला दिया, मेरी मिसेस को रुला दिया उन्होंने। कितनी निष्ठुर कवित्री है ये, सोचिए। ऐसा मत बोलिए। तो ये जो बातें हैं, यानी हर आदमी ने कम से कम ये 3 काम करना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ये एडवोकेट रॉबिन शर्मा बोल रहे हैं। काम हर एक ने करने चाहिए। एंड द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज द भाभड़ पब्लिकेशन हाउस है, जो आपको लिखने के लिए भी मदद करता है, आइडिया भी आपको देता है। और मैं जहां तक सुना हूं कि सर के तो फॉरेन में भी ऑथर लोग हैं, सर के जो स्टूडेंट है वो फॉरेन में भी है। उनके भी वो यानी भले ही उनकी इंग्लिश मेरे जैसी थोड़ी इंग्लिश है, सर की भी इंग्लिश मेरे जैसे ही है, इतनी अच्छी है ना। लेकिन चलो ठीक है। अगेन द लैंग्वेज इज टोटली डिफरेंट एंड कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। लैंग्वेज है ना, इंग्लिश, हिंदी, ये सब भाषा है, लेकिन कम्युनिकेशन एक आर्ट है। ये आर्ट है, और ये आर्ट एक लेखक को अपने आप आ जाता है। जब आप लिखते रहते हैं ना, अपने आप आ जाता है। मैं इतना अच्छा स्पीकर, आई एम नॉट ए गुड स्पीकर, बट आई एम ट्राइंग टू whatever जो मेरे अंदर फीलिंग्स, इमोशंस अभी आ रहे हैं, वो मैं डिलीवरी करने का कोशिश कर रहा हूँ। अब तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा मुझे पता नहीं। और ये किताब जो है, मेन जो एक अध्यात्म से जुड़ी हुई है, भले ये मटेरियलिस्टिक चीजों पर है, लेकिन ये हमें शमशान भूमि, ये जीवन का अंतिम सत्य होता है। ये जीवन का अंतिम सत्य है मानव जीवन के लिए। लेकिन अध्यात्म क्या बोलता है? अध्यात्म कहता है इसके बाद एक नई जर्नी शुरू होती है। जैसे आपने किसी को ट्रेन में तो बैठा दिया, ट्रेन चली गई, उसके बाद क्या? ट्रेन तो वहां से गायब हो गई ना, लेकिन उसके बाद वो पैसेंजर की तो जर्नी चालू है ना। हम किसी को बस में बैठा देते हैं, ऑटो में बैठा देते हैं, वहां से तो वो पर्सन हमारे सामने से ओझल हो गया है, हमारे सामने दिख नहीं रहा है, वो पूरी तरह से इनविजिबल हो गया है। लेकिन वो जो पर्सन ऑटो में बैठा है, बस में बैठा है, ट्रेन में बैठा है, उसकी जर्नी तो चालू है। ये अध्यात्म का जो दूसरा नियम है, यानी ये जो जिंदगी के बाद की जो जिंदगी है, उसी पर एक कहानी है, और ये बहुत सारे सबक हमें देती है। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि 2 जर्नीज होते हैं, तो पब्लिकेशन में भी हम सबको बताते हैं कि यहाँ पे भी 2 जर्नीज है। हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, या हम जिस चीज पे काम करते हैं, बिलीव करते हैं, कभी कभी थोड़े बहुत आगे पीछे होता है, मैं ये भी एग्री करता हूँ, ओपन प्लेटफॉर्म है, लाइव इवेंट है, फिर भी पर हम ज्यादातर या जिनसे भी बात करते हैं, जिनको भी ये काम पे फोकस हमेशा यही होता है कि पब्लिश होने तक का एक जर्नी है, जहाँ पे बुक पब्लिश होने तक का एक जर्नी है, और उसके बाद एक्चुअल जर्नी शुरू वहां से होता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का जर्नी, हम जितना लॉन्ग टर्म जाने वाले, क्योंकि बुक एक बार पब्लिश हो गया मतलब खत्म हो गया ऐसा नहीं है, वहां से तो एक्चुअल जर्नी शुरू होता है, और वहां से आगे फिर हम पिक्चर में आते हैं। तो आप सभी के फिर से एक बार
Once again, congratulations to Dr. Dinesh Gupta sir, and welcome all once again. So, without wasting so much time, let's invite our proud authors. So, मैं ममता मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आगे प्रोसीड करें. सो ओवर टू यू मैम. एंड स्पेशली मैं ममता मैम के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा, बहुत सपोर्टिव है. जब भी कुछ इनिशिएटिव्स होते हैं ग्रुप में, हमारे कोर टीम मेंबर में जब भी कुछ आता है तो डेफिनेटली वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए रेडी रहते हैं. तो heartfelt gratitude to you ma'am. Thank you once again, and over to you. Yeah, Thank you so much. I am in a learning process, so naturally I will be there with you. है ना? Doctor, I will be inviting Dr. Devesh Mohan right now to introduce himself and speak about his. थैंक यू मैम. एंड अभी डॉक्टर नहीं बना हूँ, तो अच्छा, जैसे दिनेश जी कह रहे थे कि शायद आगे बन जाए, तो बिल्कुल. एंड ममता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. दिनेश जी, आपकी बड़ी स्पीच धमाकेदार थी, बड़ा मजा आया सुन के. और आकाश जी, आपको पहली वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत बधाई, आपके आकाश पब्लिकेशन के लिए. एंड ABCD की जितनी भी ब्रांचेस आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसके लिए, सभी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो. और मैं कभी ये सोचता हूँ कि आपसे जब भी बात करता हूँ तो बुक राइटिंग seems to me like a T20 match, that you can write it so quickly, right? But for me, it has been something which it took me 2 years to write this book, which is Build Your Sales Muscle, which is almost like a 200-page book, which I have written after basically during the COVID times, when I was just self-evaluating myself, doing my own journey evaluation. तो मैंने सोचा कि 22 साल हो चुके थे मुझे सेल्स में. So that was something which I need to go through, and it almost took me 2 years to come up with this book. But हाँ, इसमें मैंने बहुत मेहनत करी है. और मेरी जो बुक की प्रूफ रीडिंग हुई है या जो इसकी एडिटिंग हुई है, इसमें ग्लोबली बहुत लोग इन्वॉल्व रहे हैं. तो उस पर्सपेक्टिव में ये बुक इस तरीके से मैंने लिखी है कि इसमें 3 अलग अलग सेक्शंस हैं, जिसमें पहला सेक्शन जो है वो बेसिकली मेरी खुद की अपनी जर्नी को दर्शाता है कि मैं बहुत ही एक तरीके से इंट्रोवर्ट बंदा था आज से 22-24 साल पहले. मुझे याद आता है जब मैं 98 to 2000 I was doing my MBA. At that point of time, even if I had to be on the stage, my legs used to shake. डर लगता था कि कैसे बोलना है. और फिर उसके बाद जर्नी चलती रही, जिसमें कि जब भी कभी सीनियर किसी बंदे से मिलना होता था तो ऐसा लगता था कि मैं कैसे बोल पाऊंगा. सो देयर वर लॉट ऑफ फियर्स व्हिच वर देयर इन माय माइंड. फियर ऑफ रिजेक्शन होता था बहुत ज्यादा. तो आज की डेट में मैं ये सोचता हूँ, वाइल मैंने ये जो बुक लिखी है इसमें it's very much related to sales, but it's for everyone. क्योंकि अगर मैं ये क्वेश्चन आप सबसे पूछूं कि आर यू अ सेलर, तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आप लोग अनम्यूट करके बताइए कि आर यू अ सेलर, आप बेचते हैं कुछ भी? जी सर, बिल्कुल. Yeah, we are. Yes, I also would like to say that we are all are sellers. Yes, thank you so much. Yes sir, we are really seller. बिल्कुल सर. तो हम लोग सभी अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेचते हैं. बस हमें तमगा मिल गया है कि मैं सेल्स प्रोफेशनल हूँ और मैं एक इंटरनेशनल एक UK बेस्ड कंपनी में डायरेक्टर हूँ, which gives me a designation of being into sales. बट हम लोग सभी सेल करते हैं, जैसा कि आपने बोला. चाहे हम अपने बच्चों को कुछ इन्फ्लुएंस करना चाहें कि उनको 12वीं के बाद क्या सब्जेक्ट लेना है, तो वहाँ पे इन्फ्लुएंस चालू होता है, वहाँ पे परसुएसिवनेस चालू होती है, वो भी एक सेलिंग है. या हम सब्जी मार्केट में कुछ सब्जी लेने जाएं तो वहाँ पे भी कुछ न कुछ तरीके से हम खरीद फरोख्त करते हैं, तो वहाँ पे भी सेलिंग है. या
कुछ भी हम छोटी से छोटी चीज भी करें, अपना एक आइडिया कहीं भी इम्प्लांट करना है तो वो भी एक सेलिंग ही है। तो उस पर्सपेक्टिव में जो इसका पहला सेक्शन है वो इस बुक का उसी को दर्शाता है कि क्या हमारी मानव दशा रहती है। मैं तो बहुत ही डरपोक किस्म का था बचपन में। बचपन डरपोक किस्म मतलब कि आई हैड लॉट ऑफ माय फियर्स इन टर्म्स ऑफ दैट व्हाट वुड हैपन, व्हाट पीपल विल से अबाउट मी, how will I be able to interact with others, या मुझे उनसे बात करने से पहले यही डर लगा रहता था कि कहीं मैं इस चीज को अच्छे से नहीं बता सका तो मैं तो फेल हो जाऊंगा, या मेरे को सक्सेस नहीं मिलेगी। तो मैं इन्हीं इन्हीं भावनाओं में बहता रहता था। तो उसको मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे उसको मैंने ओवरकम किया, एंड हाउ आई हैव बिल्ड माय सक्सेस माइंडसेट। एंड टिपिकली जो मेरा एक सेल्स प्रोफेशनल का 20 साल का जर्नी था, उसको मैंने कैसे एक मल्टी डायमेंशनल आइडेंटिटी दिया, कि मैंने कैसे कोविड टाइम्स में मैंने इस बुक को लिखा। मैंने अपनी हेल्थ के प्रति बड़ा जागरूक हुआ, एंड देन आई स्टार्टेड रनिंग हाफ मैराथन्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग, या मैंने अपनी खुद की लीडरशिप कोचिंग कंपनी खोली, या मैं आज की डेट में लगभग 1000 बच्चों को सोशल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से सपोर्ट करता हूँ। मेरी खुद की एनजीओ है। तो पॉइंट ये है कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपका वो सक्सेस माइंडसेट है, जैसे कि मिस्टर भाभड़ का है। भाभड़ साहब जो हैं एक बहुत ही छोटी उम्र के हैं, और मैं उनको हमेशा बोलता भी हूँ कि आप चाहे गलतियां करें, लेकिन आपके साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहता है, क्योंकि आप बहुत हम्बल रहते हैं, और आप में हमेशा एक सीखने की लर्निंग की एक हमेशा आप वैल्यू उसको देते हो कि मुझे कुछ सीखना है। तो आई थिंक दैट्स अ वेरी वेरी very exceptional quality which a person should have if they have to grow in their career। और आप तो अभी मेरे हिसाब से क्वार्टर ऑफ द सेंचुरी पार किए होंगे, या उसी के आसपास होंगे, 25-26 साल के। 26 तो हाँ 26 स्टार्ट। हाँ, मतलब उसी के आसपास हैं। तो इस समय तो जिंदगी में लोग यही सोचते हैं कि क्या कर सकते हैं। आपने तो बहुत बहुत नए नए मकाम हासिल कर लिए। तो आई अगेन कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर दैट। तो हाँ जी, तो मैं वापस बुक पे आता हूँ। तो बुक का पहला तो यही पोर्शन है जो कि ऑल अबाउट दैट हाउ यू कैन क्रिएट दैट सक्सेस माइंडसेट, and that's applicable to all. The second portion is all about in terms of that how as an individual आप जब सेल करते हैं तो आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आप कैसे उसको एक प्रोसेस क्रिएट कर सकते हैं। उस प्रोसेस के साथ इट्स आल्सो एन आर्ट एंड साइंस, तो उसको आपको समझना पड़ेगा एज अ सेल्स पर्सन। और कुछ चीजें जैसे आप नेगोशिएशन कैसे करते हैं, और इन सब चीजों पे फोकस है। और तीसरा जो मॉड्यूल है विच इज मोर अबाउट दैट एज यू मूव इनटू द लीडरशिप लैडर, then as a leader of your sales teams, or if you run an organization, what type of mindset you have to build, and how you can lead your teams to be successful, and how you can deal with change, because change is something which is so is something which is inevitable. Change is the only constant जैसे कहते हैं। और आज की डेट में आप कोई भी काम करें, आप देखेंगे कि आज बिकॉज इन दिस एज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, किसी भी चीज की जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत कम है। तो उस पर्सपेक्टिव में हमें चेंज को अडॉप्ट ऐसे करना पड़ेगा कि हमें चेंज एज अ माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और वो हम माइंडसेट बना करके कैसे हम अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले टीवी होता था, टीवी कम से कम 30 साल तक आप चलाते थे। आजकल तो आप फोन 1 साल में चेंज कर देते हैं। तो शेल्फ लाइफ नहीं है किसी भी चीज की। आपको भी कंटिन्यूसली अपने बिजनेस को, अपने अपने इवेंट को, आपको सबको अपडेट करते रहना पड़ेगा। जैसे आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम फोन का अपडेट करते रहते हो या लैपटॉप का करते रहते हो, एवरी टाइम यू हैव टू, एंड यू हैव टू अडॉप्ट इट विद नो स्ट्रेस। तो ये सब पे पूरी ये बुक है। और आप लोग इसको अमेज़न पे
पा सकते हैं। इट्स amazon.in पे भी अवेलेबल है, amazon.com पे भी अवेलेबल है, और 31st तक था। आई थिंक देर इज 1 day गैप, बट आई थिंक आकाश उसको हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी को आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप लोग खरीदना चाहें, तो अभी ये 30% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है amazon.com पे और amazon.in पे। और yes, that's all what I wanted to say. Looking forward to hear from others also, and thank you so much for giving me this opportunity. Thank you, sir. Thank you. Yes, thank you so much, sir. Just sorry, Mamta नहीं ma'am. नहीं, पर क्या है ना कि मैं थोड़ा इस इवेंट को अपन क्या कर रहे हैं ना, ये कोई ऐसा ऑफिशियल इवेंट जैसा अपन नहीं कर रहे हैं, हाँ। तो इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम सब जुड़े हैं। हाँ। तो कुछ चीजें मैं ऐसी शेयर करने वाला हूँ कि कैसे एक साल में कैसे रिलेशंस रहेंगे, क्योंकि ये सभी लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ, पर्सनली मैं बहुत अच्छे से कनेक्ट हूँ, उसका कोई ये नहीं, पर सबको पता भी चलना चाहिए कि कैसे कैसे चीजें होती है, मतलब क्या क्या एक्सपीरियंसेस रहे। तो मैं सर के बारे में भी बताना चाहूंगा। जब हम सबसे पहले तो वो हमारे पहले बेस्ट सेलर ऑथर है जिन्होंने हमारा बेस्ट सेलर पैकेज चूज किया था, तो थैंक यू फॉर दैट आल्सो सर। और उनको जिन्होंने रेफर किया था आशीष सर करके थे, तो वो भी एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, और उनको इनवाइट करने वाले थे हम एज ए गेस्ट, पर वो सर ने बोला था कि वो यूएसए में है, और आज सुबह ही उनसे बात हुई थी, वो अभी आए हैं पर उनको कुछ काम था तो वो नहीं ज्वाइन कर रहे। तो ऑफ कोर्स वो भी साथ में रहेंगे। पर होता क्या है ना, इन लोगों से जब सीखते हैं हम, इन लोगों से जब बात करते हैं ना, तो बहुत क्लैरिटी आती है। मैं जब भी देवेश सर से बात किया या जब भी उनसे कुछ हुआ, तो एकदम क्लैरिटी, मतलब हम क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा बात घुमा घुमा के बोलने का ये होता है, पर इनसे अगर बात करेंगे ना कोई भी, तो एकदम क्लियरली, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती चीजें। भले वो बात में तो है, पर अपने लिए भी वो बहुत सारी चीजें होती है, उनसे बहुत कुछ सीखने के लायक है, तो इजी होता है। मैंने काफी कुछ सीखा है, उनको उनको पता नहीं, उनको मैंने बताया नहीं है, पर ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, और एक क्लैरिटी का पॉइंट मैंने बहुत अच्छे से सीखा है, और वो इम्प्लीमेंट भी किया है। वो अराउंड नवंबर से मैंने वो चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखा है, और डेफिनेटली अपने जो सेवा का मौका दिया उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद। और जो भी काम जो भी चल रहा है उसको और बेहतर डेफिनेटली हम करते जाएंगे। कुछ चीजें होती है, पर ऑफ कोर्स हमेशा अपग्रेड करना, अभी हमारे मेंटर्स भी है साथ में, तो डेफिनेटली सब चीजें ऑन द वे है। सो थैंक यू वंस अगेन, एंड ओवर टू ममता मैम। और हम सब थोड़ा टाइम का ध्यान रखेंगे, 5 to 7 मिनट सबको है, तो उसमें अपना बुक का जर्नी आपने कैसे लिखा, क्या बुक से आप मैसेज देना चाहते हैं, वो सब चीजें आपको शेयर करना है। यस मैम। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा देवेश सर के बारे में जान के, और उनकी बुक के बारे में भी जान के, और डेफिनेटली हम उसे लेंगे और पढ़ेंगे और एनलाइटन भी होंगे इस बारे में। अब मैं इनवाइट करती हूँ मिस्टर मोहम्मद सिराज जी को टू कम एंड डिस्कस अबाउट हिज बुक एंड अचीवमेंट्स। Am I audible, everyone? Yeah. Yeah, very good evening, ladies and gentlemen. And the first I want is the most successful authors, and I wish you a great success. And before I start, I congratulate Aakash Bhabad for his great journey. बिकॉज मैं जब आकाश से मिला था, बहुत स्टार्टिंग की जर्नी थी, न्यू ऑर्गेनाइजेशन था, जैसा देवेश सर ने कहा, एक लॉकडाउन का पीरियड था, पता नहीं सब ऑर्गेनाइजेशन क्लोज हो जा रहे थे, जॉब्स चले जा रहे थे, लेकिन आकाश ने उसी टाइम में अपना स्टार्ट किया, और इतना कॉन्फिडेंट था अपने आप पे कि विजन बहुत बड़ा था आकाश के माइंड में, बस वो विजन को एक एक पर्सनालिटी रास्ता बनते गए, और उस विजन को आगे लेकर आज हम यहाँ पे हैं कि 4-5 प्रोडक्ट बन गए। जैसा कि मैं भी एक विटनेस हूँ कि आकाश ट्रेनिंग से लेकर आकाश टॉक्स, एबीसीडी इंटरनेशनल टॉक्स, उसके बाद पब्लिकेशंस, एक एक जुड़ते गए, और अच्छे अच्छे लोग ऑल ओवर इंडिया से जो जुड़ते गए, और हमने बहुत अच्छा नेटवर्क बनाया। आकाश का ग्रेट अचीवमेंट है आकाश का। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि आकाश का जैसा विजन है, हम सबको भी कुछ ऐसा ही विजन बनाना है,
कि अच्छे लोग से मिलने से, अच्छा इन्वायरमेंट से मिलने से, अच्छी संगत से ग्रेट वर्क्स होते हैं और ऑथर्स और बुक्स लॉन्च करेंगे। मैं रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि हम सबको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेना चाहिए कि हमने लिख दिया बुक, लेकिन हम किसी और को भी इनवाइट करना है। जैसा कि मैंने बहुत सारे ट्रेनर्स को बोला है कि बुक लिखना शुरू कर दो। स्टार्टिंग लगेगा कि बहुत बड़ा टास्क है। मैंने जब मेरी बुक शुरुआत की थी आइडियल इंस्पायर, जस्ट मैंने एक सेशन कंडक्ट किया था। जैसा कि मेरे अपने बारे में नहीं बताया, शायद बहुत सारे फर्स्ट टाइम है। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज मोहम्मद सिराज। आई एम ए मास्टर ट्रेनर फ्रॉम अमेरिकन काउंसिल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। आई एम ए सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर ट्रेनर फ्रॉम NIST, सर्टिफाइड प्रोफेशनल ट्रेनर फ्रॉम Bangalore, सर्टिफाइड बोधी ट्रेनर, and internationally certified life coach, NLP practitioner, as well as certified parenting coach. I'm an author and mechanical engineer. I'm just 27 and I am from Hyderabad. And I do right now corporate senior corporate trainer in Avinash Group of Institutions. This is my little introduction. When I started writing, मैंने जब decide किया कि मुझे कुछ book लिखना है, so I got 90% answer is अभी इतना जल्दी क्यों लिख रहे हो, अभी बुक लिखना बहुत लॉन्ग सफर है, क्यों लिख रहे हो। या आकाश मेरी बुक बता रहे। तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग शायद मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ, या फिर बहुत सारे लोग ने कहा कि बुक लिखना बहुत बड़ा टास्क है, इतना बड़ा टास्क है, ज़्यादा टाइम लगेगा, रिसर्च करना पड़ेगा, ब्लॉग्स देखना पड़ेगा, वेबसाइट देखना पड़ेगा, लाइफ स्टोरीज, एक्सपीरियंसेस। मेरे लाइफ में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मुझे एक जगह मैंने 300 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया। उसके बाद एक लड़की रो लेते आई, उसने she was crying a lot when I concluded my session, and she asked me that I am from rural background. My mother made me to join this hostel campus. It was more than 1 lakh rupees. So she's making pressurization that I have to get good marks. I need to pass. I need to get success in life. Because of that pressurization, I'm unable to eat and sleep whole night. So she was crying. I just handled the situation. I explained. I talked to her mother. After that, she asked me that you will come once in a year. Like that, I used to visit 70 to 80 campuses of that organization. So she asked me, do you have any book? Then my mind got triggered that अरे यार कुछ देते हैं इनको, कुछ भी नहीं है मेरे पास. So I just thought at the time, yes, we need one book to give someone that it can be helpful someone life to change, transform, or learn something, implement, to understand. So that time I realized that yes, I need to start this, not for me, at least for the people, those who are waiting, whatever knowledge, skill, and my experiences are there in my life, I have to contribute to the society for transforming people. So from that I started. Then my book is entirely a transformation book, where every failure, I just concentrated the concept called failure. So from failure to all categories, vision, leadership, goal, and whatever comes in our life, how to handle, like first step in life. So I collected total 36 chapters name. I sat and I just started. And after that I met Aakash. मैं आकाश को बोला कि बुक करना ही करना है. Then आकाश बोला सर हमारे पब्लिकेशन से कर देंगे. Then we just go ahead and we completed. Aakash was very supportive in the team when I started. So then overall we got a good success, and the review is from the students. I got very good review. Now we are now I have a meeting with a publisher. 700 to 800 books. We are making 7 international schools to have 8th and 10th, 9th and 10th class students to read this as a common book. So there is a big vision with this book to reach every student and professionals as well, those who are looking some gap in their life or something they want to do extraordinary, but something is stopping them. For them, it is a good solution. And I'm not taking more time. So this is my journey. Thank you so much for giving valuable opportunity. I congratulate for your books and your career, and all the best for upcoming endeavors, and all the best to Aakash and team. Next year we want to see Aakash to a new product, and as well as new trainers and new network to meet and help them to grow as well. Thank you so much. Thank you, sir, and congratulations on your book also. So, of course, अभी मैं सबके बारे में कुछ ना कुछ बताने वाला हूँ. तो सिराज सर से जब हम कनेक्ट हुए थे पब्लिकेशन के लिए, तो काफी सारी चीजें हुई, बहुत सारे इजी वे में सब चल रहा था. और रिसेंटली सर ने जब बुक का ऑर्डर दिया तो मैं यहाँ पे नहीं था मुंबई में,
मैं 26 जनवरी का जो इवेंट था तो गाँव गया था, और यहाँ पे ऐसा हुआ कि जो कुरियर वाले थे उन्होंने उनका बुक को कुरियर ही नहीं किया, तो बीच में 26 का छुट्टी भी आया, तो वेटिंग, और मैं भी बाहर था, तो 2 रेगुलर इवेंट्स से तो मैं 2 दिन उनके कॉल ही नहीं रिसीव किया, तो ये सब है। और पर फिर भी ये जर्नी बहुत अच्छी होती है। मैंने जब उठाया नहीं तो बोला नहीं ठीक है, अभी आज के दिन और नहीं उठाते, देखते क्या होता है तो फाइनली जब वो ट्रैक हुआ तभी मैंने शेयर किया कि हाँ ये अभी ये हुआ है, तो ऑफकोर्स उनको आज शायद नहीं मिला है तो कल मॉर्निंग में मिलेंगे। पर बहुत अच्छी जर्नी रही, बहुत सपोर्टिव है। जब हम स्टार्ट में थे ABCD के तो काफी सारा हेल्प किया था, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वो करते हैं, इंटरनेशनली उन्होंने अपने सेशंस दिए हैं, तो इट्स अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। और डेफिनेटली उनका बुक भी अमेजोन पे अवेलेबल है, तो वो भी आप परचेस कर सकते हैं। जो भी ऑडियंस बाद में देखेंगे उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप डेफिनेटली वो बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, पेपर पैक ई बुक दोनों भी अवेलेबल है। और सो लेट्स मूव अहेड। सो वंस अगेन सॉरी ममता मैम टू इंटरप्ट, बट ओवर टू यू। No, there Thank is you so nothing. much, Akash, for valuable words. Yeah. Akash, there is nothing to be sorry. Actually, अच्छा लगता है पता करके सबके बारे में, how did you interact and all. ये सबके बारे में थोड़ा हाँ, पता होना चाहिए। मेरा भी परिचय होते जा रहा है इसी बहाने सबसे, एंड आई एम आल्सो गेटिंग इंस्पायर्ड डेफिनेटली। अब मैं नेक्स्ट इनवाइट करूंगी मैडम प्रीति सारस्वत को टू इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एज वेल एज हर बुक। Thank you so much, Mamta ma'am. I knew you that you have already attended that one of the session. You were host over there, so it's the second time. I know I'm new for you, but I know you very well, and you are doing a very good job. And now the second one, yes, it's a great journey with Akash sir, and he's the only one who motivated me to just write a book, because even I mentioned this thing in my first interview as well. Before this I thought no, I'm not able to write. Even when we have discussed and we become a part of his core team, and we were planning to start a mentorship regarding the same, that how to publish a book. When I have joined Akasa session and all, and the most turning moment of my life when I joined the Mumbai event, and I met lots of successful authors. It really inspired me. And most of that person, I think they are not very much know about me, but even I'm very much inspired by them. And Dr. Ritu ma'am as well, Sunita ma'am as well. And there were so many authors, even I read their books and I get really much inspired. And Sunita ma'am's book, I usually read regularly. Even my daughter used to read, my mother-in-law sometimes used to read, because it's about that RIP. The Patriarchy is one of my favorite books. I know before talking about my book, why I'm telling others, because author's journey start with inspiration. So I just want to tell you how I get inspired being an author. So, that moment, every time, being a language teacher, generally they ask one question, especially to language teacher, either in their English, they ask that, what is one of your favorite book? And that moment, and that clause was beyond the text. So that moment, yes, we usually say the Shakespeare's book, or that, lots of Robert Frost and all. That moment I said, now I would like to talk about one of the unique book, and that was Patriarchy, written by Sunita Singh. So, Sunita ma'am, I explained each and everything about your book, that moment, and I got a praise just because of you. So it's really a kind of learning experience for me as well. That moment I decide, yes, I have lots of views in my mind, and why should not write about my students? And that moment, sir told me that, ma'am, you have to decide your topic first. Then you can do anything else. The most important difficult task is just decide a topic. So that moment I decide, yes, being a teacher, I have to talk. I have to write about my students. So that moment I realized that, nowadays the students, even the senior students,
up to like 9 to 12 if we are talking about. And the teenagers really dealing such a serious issue. We cannot say the serious issue. So for them, they are serious point. But I realized they don't have any kind of person or a platform there they can showcase their views, their inner feelings. So I provide them a small platform where they can share their views. So that moment I offer this a golden moment to all my students. If you want to express your own works or your views, you are truly welcome in my book. So I got a huge response from my students, and even they're really thankful to me. But instead of that, I really thankful to them. So that they share their views, and I, being a teacher or being a human, I really feel good whenever the person shows believe in you and share their personal views with you. It's really a kind of the win-win feeling. So this book is really close to me, and everything मेरे dreams को wings देने के लिए I really thankful to Bhabad publication. And this book is all about not for the students. This book is for the teachers, parents, students, though even though commoners as well, because it's not about the child or that student or a male or female. It's about the behavior. Whenever we see, हम लोग किसी और के भी बिहेवियर को देखते हैं. जैसे हम कहीं रिलेटिव में रिलेशन में जाते हैं तो हम बोलते हैं देखो ना कितना स्टबन बच्चा है, कैसा बिहेव कर रहा है. We never know the conditions, circumstances and all. So this book will help you that how to manage the situation with such youngsters, because they are also having some aspiration with life. और जब उनको वो चीज नहीं मिलती है, they start behaving and try to get the center of attraction. And the most important point, whenever they are not sure that they are doing correct or not, so they always work in the dilemma. And that that moment they're not able to satisfy each and everyone, because there are lots of things with our kids. हमारे बच्चों के पास भी बहुत बर्डन है. हम बोलते हैं एज अ पेरेंट कितना काम है, स्कूल का काम देखो, अपने बच्चों को देखो, बच्चों की प्रोग्रेस को देखो, एकेडमिक रिकॉर्ड्स एंड ऑल. बट हैव यू जस्ट थिंक अबाउट कि उन बच्चों को उनकी भी कुछ पर्सनल फीलिंग्स होती है, उनको अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपना एक इमेज बना के रखनी है, उनको पीयर प्रेशर से भी ओवरकम करना है, टीचर्स के एक्सपेक्टेशन को भी क्लियर करना है, बिहेव भी अच्छा रखना है, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को भी रखना है, छोटों से ऑलवेज उन्हें प्यार से बात करनी है, बड़ों से सीनियर्स रिस्पेक्टफुली बात करनी है. सो देयर वाज सो मेनी टास्क. सो समहाउ it happened when they lost their the control or anger sometimes. So in my book I try to give them a solutions कि how as a parent or as a their supportive tool हम क्या कर सकते हैं उनके साथ. So this book is not talk about that problems and all. Very firstly, I explain the situations कि हर category में किस तरह की situations आती हैं. It's not about academic. Academic की बात तो सब लोग करते हैं. There are some personal issues as well. I just want to share one of the experience. And one of the girl, now she's 11, but that moment when she was 9, and I was dealing with that girl, and she was very quiet and shy kind of a girl. And I thought, why the girl is very good in academic and all, why that you feel shy and you're very introvert and all. So that moment said, no ma'am, I don't want to be. But that moment, I give them opportunity to write. The way he wrote, it was really remarkable. That उसने अपनी सारी दिल की बात निकाल के रखी और उसने clearly mention किया कि I always quiet because I believe this that that closer one of the family surroundings not deserve to share my view. मतलब I'm not ready to share my views with them because I knew that they will never understand. वो कभी समझेंगे ही नहीं मेरी बात को, इसलिए मैं अपने व्यूज शेयर ही नहीं करती किसी के साथ. एंड आई डोंट वांट टू लाइक टू शेयर इवन माय फ्रेंड्स एज वेल, क्योंकि वो मजाक बनाएंगे. पेरेंट्स को बोलने पे वो एक्सक्यूज करेंगे, टीचर्स को बोलेंगे they said yes it generally happen, you always have a same thing. So just read that particular real experiences. So that's a moment. Even that girl also that would like to take a name, Khyati Chaube. It is mentioned the name in my book. The way she has written, it was really remarkable. आप बच्चों की creation को पढ़ेंगे ना, तो really आप connected feel करेंगे कि God
हाउ मच दे आर सफरिंग, कितना पेन है उनके अंदर और कितना फ्रस्ट्रेशन है, एंड समहाउ वो कामनेस भी है। तो मैंने हर लेवल को क्लियर आउट करने की कोशिश की, ताकि जो लोग न्यू जनरेशन के साथ डील नहीं कर रहे हैं वो भी जरा देखे कि बच्चों के अंदर क्या चल रहा है, यू नो। एंड आई इवन नॉट प्रमोटिंग द आइडिया कि हम उन्हें पैम्पर करें, नो, हम सिर्फ उनके अकॉर्डिंग चले, नो, यस, इट्स एन गिव एंड टेक। सो आई हैव गिवन द क्लॉजेस एज वेल। अगर बच्चे आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे, try to mold yourself, give them some deadline and try to change, and whenever it comes out with hurt ना, वो दिल से काम करेंगे आपके साथ, फोर्सफुली कोई काम एक सक्सेसफुल लेवल पे नहीं जा सकता। सो मैंने इन चीजों को ही मिक्स एंड मैच करके, कुछ अपने व्यूज देखकर, कुछ अपनी रियल क्रिएशंस देके कोशिश की है उस बात को समझाने की, क्योंकि ये नई जनरेशन ना अगर ठान ले तो कुछ भी कर देगी। बस जरूरत है इनके दोस्त बनने की, इनकी प्रॉब्लम्स को समझने की, क्योंकि शायद वो प्रॉब्लम्स हमारे टाइम में नहीं थी। एवरी पेरेंट यूज्ड टू से, जब हम थे ना तो हम क्या क्या करते थे, जब हम तुम्हारी एज के थे ना तब हम कितना काम करते थे, हम खुद अर्न करते थे या हम सब कुछ मैनेज करते थे। बट शायद अब वो सब्जेक्ट्स नहीं है, तब शायद वो प्रेशर नहीं था, उस समय पर वो सिचुएशन नहीं थी। तो जब सिचुएशन चेंज हुई है तो बच्चों का माइंडसेट क्यों नहीं। सो मेरा बस मोटिव यही था कि लोग इसे पढ़ें, फीलिंग्स को जाने और कोलैबोरेट करें। और मैं एक भी पर्सन को अगर किसी भी एक रिलेशनशिप को सफल करने में कामयाब रही तो मैं समझूंगी कि आई बिकम अ सक्सेसफुल ऑथर। बीइंग अ सक्सेसफुल ऑथर इज नॉट अ जर्नी कि मैं अपनी बेस्ट सेलिंग या मैं अपनी बहुत ज्यादा बुक सेल कर पाऊं। मेरा सक्सेस यही होगा कि मेरी बुक से पढ़कर शायद कोई इंस्पायर हो जाए, जैसे मैं बाकी बुक्स पढ़कर इंस्पायर हुई हूँ, जैसे मैं कुछ ऑथर्स का नाम ले रही हूँ। And even and I usually feel that my co-author and my that friendly connection with Shubha Mukherjee ma'am, हम लोग फॉर्मली वी आर नॉट कनेक्टेड, हमने कहीं स्पेशली ऐसा कुछ स्पेशली बात नहीं की है एंड ऑल, बट हर प्लेटफॉर्म पे मुझे मैम मिलते हैं तो एक मॉरल सपोर्ट रहता है। हम लोग बहुत सारी एंथोलॉजीज में भी कनेक्टेड है, मैं जहां देख लेती हूँ कि मैम का नाम है वहां मेरा नाम है, आई ऑलवेज फील कि समवन इज क्लोज टू मी। सो ऐसे कनेक्शंस है मेरे काफी लोगों के साथ। और मेरा भी एक लोग बोल रहा है कि मैं भी अपनी फीलिंग्स, बीइंग अ टॉकेटिव पर्सन, स्टिल अपनी रियल फीलिंग्स नहीं पहुंचा पाती हूँ काफी लोगों के साथ। सो देयर आर सो मेनी ऑथर्स जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, लेकिन शायद उनको आज तक पता नहीं है। सो इट्स रियली अ ग्रेट जर्नी, और मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मैं इतने सक्सेसफुल ऑथर के साथ कनेक्ट होके काम कर पा रही हूँ। और आकाश सर का तो बहुत बड़ा थैंक यू है कि उन्होंने जो मोटिवेशन मेरे अंदर डाला है कि यस, anybody can write it and I can also write it. So अब ये जर्नी बहुत दूर जाने वाली है। आई होप कि मैं अपनी सिल्वर जुबली भी सर के साथ बुक की सिल्वर जुबली किसी दिन सेलिब्रेट करूं। So this is my small journey and I love to become an author, and being my first book, it is really close to my heart. So I request everyone, I'll share a link in the chat box. Please share with your friends and family and support my first book. This is all about. So thank you everyone listening me very patiently. Thanks a lot. Yes, thank you, Preeti ma'am, and for sharing wonderful thoughts, and congratulations once again. So प्रीति मैम के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा, उनकी बुक के बारे में स्पेशली आज, क्योंकि जब मैं एक मीटिंग के लिए गया था, अभी काफी दिन से मैं ऑफलाइन कुछ लोगों से मिल रहा हूँ, तो एक लॉयर है हमारे ग्रुप के, हम बिजनेस नेटवर्किंग के ग्रुप में हम जुड़े थे, तो उनसे मैं जब मिला था तो उनका मेरे पास सैंपल बुक था जो मैं सैंपल प्रिंट करके लेके आया था उनको मतलब चेक करने के लिए। तो वो बुक उन्होंने वो लॉयर ने देखा और उन्होंने ऐसे चेक करना शुरू किया। पहले तो हम क्या करते हैं ना, बुक लेते हैं तो एक दो पेज ऐसे ऊपर नीचे देखते हैं, तो वो लेडी भी काफी सारे बुक्स पढ़ती है, तो उन्होंने वो लिया, 2-3 पेजेस शुरुआत के पढ़े और डेडिकेशन तक पढ़ा था उन्होंने, और बोले कि बहुत अच्छा लिखा है। बोला हाँ वो तो है, बहुत अच्छा है। बोले नहीं सच में बहुत अच्छा लिखा है।
मैंने तो 3-4 पेजेस ही पढ़े और मुझे लग रहा है कि ये बुक बहुत अच्छा है और ये मेरे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा भी 15 साल का बच्चा है और ये मेरे लिए चाहिए, तो आप मेरे को देंगे? बोला मैं ऑथर को पूछ के दूंगा, ये तो सैंपल कॉपी डेफिनेटली बोला आपको। तो बोले कि आप है ना ऐसा करो कि आप है ना हमारे ग्रुप में लेके आओ, आप अपने मीटिंग में जब होता है तो मुझे लगता है कि वो सभी लेडीज का या जेंट्स का सभी का प्रॉब्लम है और सभी को वो बुक हम कुछ डिस्काउंट पे गिफ्ट देंगे। तो उसी टाइम पे फिर मैंने इवनिंग में मैम से बात की थी, तो वो भी रेडी हुए, उनको भी बहुत अच्छा लगा। तो होता क्या है ना कि हम अपना बुक होता है, हम हमारे पास क्या है वो सबको मतलब अपने को कभी कभी पता नहीं होता है, पर दूसरे लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब जो मैम थी, मैम को मैं थोड़ा पर्सनली जानता हूँ क्योंकि वो हमारे कोर टीम में थे। तब जाके शायद उनका कोई सपना नहीं होगा वो टाइम पे कि अभी अभी कुछ लिखे पब्लिश करे, पर वो जब टीम में जुड़े, सभी लोगों से कनेक्ट हुए और साथ साथ में जब वो जर्नी आगे बढ़ती गई तो उनके अंदर भी वो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और उन्होंने लिखा। और सबसे बड़ी तो हमारे लिए भले पब्लिकेशन के लिए तो है वो सक्सेस स्टोरी, पर एज ए टीम, एज ए सभी लोग, तो एज ए ब्रांड एम्बेसडर्स वो हमारे लिए काफी बड़ी सक्सेस स्टोरी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन मैम। और डेफिनेटली आप भी इनका बुक अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, आप भी लोगों को शेयर कर सकते हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगेगा, सबको बहुत अच्छा लगेगा और बुक भी काफी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच आकाश सर। मैं प्लीज एड ऑन करना चाहूंगी, आपका ये सेंटेंस मेरे लिए एक मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस लेके आया है, बिकॉज आई अ सिंगल रिक्वेस्ट टू ईच एंड एवरीवन, please go through it. Even if possible, I'll try to share that e-link as well, because my motive is to read, because it's my first book. Please share your reviews with me. क्या मैंने ठीक लिखा है, क्या आपको कुछ वर्ड्स फ्रूटफुल लगते हैं? क्योंकि सर के वो वर्ड्स ना मेरे लिए कॉन्फिडेंस दिया कि सर ने बोला कि उन्होंने बोला कि अच्छा लिखा है। तो इवन मुझे अपनी बुक लिखने के बाद मैं श्योर नहीं थी कि मैंने तो रियल फीलिंग्स लिखी, बट अगर कोई सामने से आके बोलता है कि आपने अच्छा लिखा, तो एक ना ऑथर के लिए इससे बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता। तो मुझे तो मेरा फर्स्ट अवार्ड मिल गया है, थैंक्स फॉर द लवली अवार्ड, बट आई रियली नीड अ स्मॉल अवार्ड फ्रॉम योर साइड. So please share your views if you are reading my book. It's really a great pleasure for me. Yes. Thank you, ma'am, once again. And over to Mamta, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Congratulations, Preeti ma'am, for your first book. And it's really nice to know that it's very useful for the society type of topic you have selected. We'll definitely go through it and we'll give our reviews also. Thank you so much. Sure. My pleasure. अब मैं इस प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करूंगी मैडम सुनीता सिंह को। आप अपने बारे में भी बताइए, अपनी बुक के बारे में भी बताइए, तो हम लोग को अच्छा लगेगा। Thank you, Mamta ma'am, for giving me this opportunity. And to begin with, I would like to first of all congratulate Aakash. You know, I to call him Aakash only because the way we met, मुझसे एज में बहुत छोटे हैं पर काम में बहुत बड़े हैं. Like he's really reached heights, and I really bless him, and I wish that he goes much and reach the heights. Dream big. He's a big dreamer, and I really support him, and I want to be a part of his journey everywhere, wherever possible. So congratulations Aakash ji, बहुत अच्छा एक साल आपके साथ जुड़ने का मजा बहुत ही अच्छा लग रहा है, and I would love to continue with this such a wonderful gathering today with such esteemed members present here and such kind words देवेश जी ने दिए हैं, प्रीति ने दिए हैं. अभी so wonderful. Thank you so much for your kind words. सुनीता मैम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ. आई वांट टू अपोलोजाइज बिकॉज सुनीता मैम्स बुक वाज पेरेंटिंग और श्रुति मैम का नाम मैंने इसमें मिक्स्ड कर दिया. तो बिफोर यू स्टार्ट मैं अपनी रेक्टिफाई कर लूँ मिस्टेक को. सो आई नो योर बुक नेम इज पेरेंटिंग एंड श्रुति मैम वाज पेट्रार्की. सो आई गॉट माय पॉइंट दैट मोमेंट. सो आई वांट टू क्लैरिफाई. ओवर टू यू मैम. Thank you. No, I understand. That's okay. So, what do I tell about myself? See, I've been trainer. I've been an online trainer for the past 15 years, and I'm working with professionals, working professionals all over the world, actually. And
as in my journey, I've been a teacher as well in schools. I've taught in schools. I am an NLP practitioner, a master practitioner. एंड जब ये बुक की बात आती है, आकाश जी हमेशा बोलते हैं अपनी जर्नी बताइए, तो there is so much to it, you know, and I would like to, because it's a time restriction, I would like to make it very precise. तो ये आइडिया ऐसे आया कि मेरा आइडिया नहीं था बुक लिखने का. I never ever thought I would write a book. What happened was there were a lot of people coming to me naturally. I don't know क्यों मेरे पास आते थे, and they would always ask for my advice and suggestions कि you know my child is not listening to me. हमको बहुत दिक्कत है, बच्चे आजकल सुनते ही नहीं है, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनते, मेरी बेटी तो ऐसी है, मेरा बेटा ऐसा है, you know, that with the small children they would have problems, and I would give them suggestions. I would tell them ऐसे करो. Then I would very often tell them कि तुम क्या करते हो, you know, what are you doing? तुम्हारे बच्चे नहीं सुन रहे, are you listening to your kids? बच्चे ऐसे होते ही नहीं है. I mean, they would, what are you doing? So practice what you preach. I would give these kind of suggestions to them. And every child is different, you know, why you want to compare your neighbor's child to your child? तुम्हारे genes अलग हैं, your parents' genes are different, his genes are different. Why do you think he's going to do the same thing? Why? So all these kind of suggestions I would keep telling them. Then one my mentor said, when you have so many suggestions, why don't you write a book? That was the first time it occurred to me that can I write a book? I never thought about it. Then आकाश जी से मिलना हुआ, मेंटर का भी सपोर्ट था, दोनों ने मिलके it created a thought कि yes, why not? And then the journey started. I started to write. Once I picked up my pen, you know, there were so many ideas that was coming into my mind. There were so many topics I wanted to speak on. Then I thought, no, this is my first book. Let me put down to certain few points which I would like to cater. Then I kind of selected and stuck to those topics, and I wrote my book. And thank you all for being present here so that I can share some feelings about the book. So my book is mainly about, you know, for parents to introspect. Like Preeti said, we also need to introspect what is going on with the child. A child, there's no bad child. कोई है ही नहीं. बच्चे तो सब खूबसूरत हैं, and they have come with so much of talent in this world. What we are, our expectations are very different from our children. You know, बच्चा कुछ बनना चाहता है, हम कुछ सोचते हैं. He's in his own way. We want him to be done. हमको time frame में बांध करना है उसको. We think कि उसको अभी music class जाना है, अभी craft जाना है, अभी sports खेलना है, then he has to come first in the class. ऐसे बच्चे नहीं होते. We didn't have a childhood like that. You know, and then we compare कि हमने तो तुमको इतनी facilities दी है. Why you're not the top? हम तो तुमको इतना, we didn't get. We are giving you much more. What you got, your child is not getting. So there cannot be any comparison. So some of my topics of the books are that perfect parenting is a myth. Because, you know, today's parents are very focused. They think कि हमको अपनी जान निकाल के बच्चे को देनी है और बच्चा मेरा एकदम मशीन की तरह perfect बनेगा. Whatever ingredients I am putting, the dish should come out very nicely. It's not like that. It's वो बच्चा है, human being है, he's going to have his own choices of what he wants to do. So there is no perfect parenting. Please don't take your parenting so seriously. Relax. आप खुश रहेंगे, you will enjoy your parenting, बच्चा भी खुश रहेगा. Create an atmosphere of relaxation, happiness, which is very important. Then some topic like every child is unique. So I've given different examples how the child is unique. Then your child is not your trophy. मतलब मेरा बच्चा first आना चाहिए. Whether it's in skating, swimming, dancing, first. He is not your trophy. वो एक human being है. वो अपनी मर्जी से डांस करेगा जब उसको करना होगा. उसको नहीं करना है तो नहीं करेगा. Give him that freedom. Let it be. Don't make him your trophy. He is not telling कि आप mother कैसी हो, बच्चे से नहीं पता चल रहा है. You are a human being. Child is a human being. Is not your trophy. Then failure. I feel this is very important in today's society. We don't talk about our failures. We only talk about our success. So मुझे लगता है कि it's a very important topic because आजकल बच्चे can't take failures. एक subject में fail हो गए, you get depression. बच्चे छोटे बच्चे second आ गए, they get depressed. छोटे से चीजों में मतलब हमें सोच के लगता है कि so what, you know. So we have to create that atmosphere कि हम भी गिरे थे, हम भी fail हुए थे, हमने भी बहुत सारी चीजें शुरू की थी, नहीं हुई थी. Failure is a part of life. Failure is a stepping stone to success. We need to talk this to our children. So मुझे एक बहुत important point लगता है so that society in the future understands that failure
बच्चों को समझ में आ जाए कि घर में पता है फेलियर ठीक है, तो वो आके आपसे डिस्कस भी कर सकते हैं. दे कैन कम एंड टॉक टू यू कि okay, this is where I think I went wrong, next time I will do this. So it's very important to talk about failure. Then it talks about communication, of course practice what you preach, gratitude, love. Now love is one thing. जब आपको कुछ भी नहीं आता है एज अ पेरेंट, यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ आपने यू नॉट एजुकेटेड ऑल्सो, बट अगर प्यार है दिल में और विच इज नेचुरल बच्चे का, और आप कहते हैं तो हर पेरेंट कहता है मैं तो बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चे से, करते हैं, हर पेरेंट अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, लेकिन एक सिंप्लीफाइड प्यार में आप एटमॉस्फेयर रखेंगे, विल नॉट क्रिएट स्ट्रेस, तो आपका बच्चा अपने आप ब्लॉसम होएगा, विल ब्लूम. सो दिस बुक इज मेनली एन इंट्रोस्पेक्शन फॉर द पेरेंट. Introspection for the parent. If the child is not listening to you, introspect yourself. What are you doing? Are you listening? आपको बात करना है, आपने मोबाइल उठा के रख दिया, or are you on the mobile and still listening to him? So similarly, your child will also behave in a similar manner with you. फिर आप बोलते हो जब वो टीनेजर हो जाता है कि मेरी सुनता नहीं, because all these years the child was trying to tell you things, you were not listening. Now he's learned the ways कि अब मैं भी नहीं सुनूंगा. So it's all these things are there in my book. So the name of my book is Parenting: The Joy of Discovering Oneself. So it's a discovery and then fun. Growing up kids, there should be no stress and tension. It should be a journey, a beautiful journey. That is what this book is about. And the book is available on Amazon as an e-reader and as a paperback book. Or I would just say that if you can, please read the book, and reviews are most welcome because बहुत मजा आता है कोई review लिखता है. Criticism और भी अच्छे लगता है because that will help me to improve in the next book, which I'm going to write soon, which should be on teenagers because that's a very big thing in my mind. And recently I got a very interesting review from an 80 years old auntie. She called me up. I said, you are reading my book because I thought you are done with parenting and kids. So she's saying, no, this book is very helpful for me to even at this stage to improve my relations with my daughter. I understand her much better. So I think I got a big reward there. So that was really very, very helpful for me. So this is all I would like to say, and I would want to listen to all the authors today. And I would like to thank Aakash ji for giving me this opportunity to be able to write the book and support me in every sphere. Thank you, Aakash ji. Yeah, thank you for sharing your thoughts. Actually, मैम के बारे में भी कुछ है बोलने के लिए, तो बताना चाहूँगा. जब हम मैम का और हमारा जब मुलाकात हुआ था ना, तब मैं जब फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था हमारा, और उसके बाद पता नहीं, मैंने रात में हम अराउंड 12:30-1 बजे तक तो वो सेशन ही चल रहे थे. उसके बाद खाना खाया और कुछ ऐसा रील या कोट पढ़ा था मैंने अब्दुल कलाम सर का कि एक बार आपको सक्सेस मिला और दूसरी बार अगर नहीं मिलता है तो लोग कुछ दिन बाद बोलेंगे कि इट वाज लक बाय चांस. तो फिर वो ना बात दिमाग में बैठ गई कि कुछ दिन बाद अगर ऐसा लोग बोलेंगे कि हाँ भाई वर्ल्ड रिकॉर्ड तो वैसा ही लग गया, तो फिर मुश्किल हो जाएगा. ये किसी को पता नहीं था. फिर वो टाइम से ना मेरे से ज्यादा खुश बहुत सारे लोग थे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, पर मन में कहीं ना कहीं ये था, बोला कि अभी क्या कर रहे, अभी तो दूसरा बनाना पड़ेगा फिर उसके लिए. तो फिर दूसरे का प्लान सेम वीक से शुरू हो गया, अभी क्या करेंगे. तो फिर 22 फेब जल्दी आ रहा था, तो एक ऐसी डेट थी, यूनिक डेट थी. लेस दिन कुछ भी करेंगे तो कोई ब्रेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे डेट आने में बहुत साल लग जाएंगे, तब तक तो कोई रहेगा भी नहीं. तो कुछ ऐसा यूनिक कंसेप्ट कर रहे थे और उसी टाइम हमारी मुलाकात हुई थी. तो बाय गॉड्स ग्रेस 22 को भी हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया. पर वो हमारे ऐसे पहले ऑथर थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम 1 टाइम पूरा पेमेंट कर दिया था, और वो टाइम पे रिसेंटली हमने 3 टाइम्स फीस को इंक्रीज किया था. मतलब जो हम पहले चार्ज करते थे उससे 3 टाइम फीस बढ़ाया था. और मतलब वो जो बातें हैं ना कभी कभी ऐसी, तो वो याद रह जाती. तो वो मैं एकदम ऐसा
नांदगांव में हमारे गांव में गया था, वैसे घूम रहा था इधर उधर, कुछ लोग फेलिसिटेट करने वाले थे, उनके यहाँ पे जा रहा था, और उसी दौरान वो जब बात हुई तो वो हमारे लिए अचीवमेंट था। और बस मैम से तब से कनेक्शन हुआ, तो ऑफ कोर्स काफी सपोर्टिव है, बहुत अच्छे से वो सब चीजें करते हैं। उनका बुक भी बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनको शायद पता नहीं, पर यहाँ पे भी काफी सारे लोग हैं, जब वो देखते हैं पेरेंटिंग, आपका बुक का कवर भी देखते तो उनको बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों ने ये बहुत अच्छा है, तो व्हाइट कलर वो जब आपने चूज किया था, कैसे कैसे डिजाइन हुआ था, तो वो सब चीजें बहुत अच्छा। हर एक ऑथर से कुछ ना कुछ एक स्टोरी जुड़ी हुई होती है। और आज भी वो मॉर्निंग में जब हम मिले थे तो वो रेडी नहीं थे सेशन के लिए, तो फिर उनके जो निजदीप सर है, साक्षी मैम है, सबने उनको मोटिवेट किया, फिर से वो ज्वाइन किए, तो बहुत अच्छा लगा कि आप भी जुड़े। सो वंस अगेन थैंक यू फॉर गिविंग अस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू। तो डेफिनेटली हम आप सभी जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं, इन फ्यूचर भी हम 2023 में भी, अब तक तो हमने 100 सक्सेस स्टोरीज तो इंडिविजुअल के कर लिए, 100 प्लस तो गए हैं, तो नेक्स्ट ये ईयर में हम 200 को भी क्रॉस करें, अगर हम सब का सपोर्ट रहा तो। और डेफिनेटली वो करेंगे भी, अभी मेंटर्स भी है अपने साथ, तो लेट्स मूव अहेड। थैंक यू वंस अगेन, एंड यस, ओवर टू ममता मैम। Please unmute ma'am. Thank you, Sunita ma'am. Thank you, Aakash, for introducing us to Sunita ma'am. And Sunita ma'am, आपकी जो बुक है उसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पेरेंटिंग भी हर एक की बस की बात नहीं है, आजकल की जनरेशन को देख के बात समझ में आती है. So it's really very helpful for the society, and we will go through it definitely, and best of luck to you always. इसके बाद मैं इनवाइट करूंगी साक्षी चौथानी मैम को. She is a well-known face for people in ABCD. Yes, she is mentor. Yeah. Sakshi ma'am. Hi, good evening, everyone. Good evening, good evening. So, Welcome. yeah, just a minute, just a minute. और साक्षी मैम की तब तक हम उनको इंट्रोड्यूस करते हैं. साक्षी मैम, शी इज लाइक माई, जो ओपन होते ना कभी कभी, बिग ब्रदर, शी इज माई बिग सिस्टर, जो हमेशा सपोर्ट करते रहते, कुछ भी मिस्टेक्स हुई तो मैसेज करते, करेक्ट करते हैं, बहुत सारा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. सो आज भी हम मिले थे तो कुछ प्लानिंग ही चल रहा था, कुछ अलग अलग चीजें हम सब मिलके करते हैं. तो इट्स अ ग्रेट सपोर्ट फॉर ABCD भाबड़ पब्लिकेशन. और शी इज बिजनेस कोच. तो yes, welcome ma'am once again, and please continue. Yeah, hi, good evening, everyone. So I have a 4-year daughter, और मेरे साथ कुछ ना कुछ होता रहता है. So I was listening to all the stories, and it's really amazing, because first of all, I would like to congratulate Aakash, and not only Aakash, I believe it's a team effort, the kind of I think the result that we are trying to give to people. तो कहीं ना कहीं वो एक टीम एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट शोज लाइक यू नो कि कंटिन्यूअसली हाउ डेफिनेटली विजन एक आपका है, बट देन उसके पीछे डेफिनेटली बहुत सारे लोग हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हु हैज बीन कनेक्टेड विद भावड़ पब्लिकेशन, डूइंग अ गुड जॉब, हेल्पिंग इन व्हाटएवर वेज you can. So quickly, I will take you through the journey of my book. So this is the book that I wrote, that was Solo Entrepreneurship Decoded. So somewhere I have been from an engineering background and from a service class family. So it was like women starting a business is something which normally Indian families don't think about. And we are 90s kids. So उस टाइम पे सब यही था, like you know, engineering, doctory, and traditional things कि आप ये कर लो, teacher बन जाओ, and all that kind of stuff. So somehow I also landed up into a job, did job some years, but then I left my job due to my maternity. And soon I realized that if I have to give a good life to my kid, so I'll have to drop out of the job, because it was taking whole 12-13 hours of my day.
So बॉम्बे में ट्रैवल करना इज अगेन डिफरेंट सिनेरियो. यू नेवर नो आप 2 घंटे बाद वहां पहुंचोगे भी कि नहीं पहुंचोगे. So this all things were there, and then I dropped out of my job and I started my business journey solo. और जब मैंने business start किया, so people were like, okay, it's just your business. So like, you know, people normally take sometimes a core business as a part-time activity, or like it's sometimes the business owner's fault also कि हम उसको एक freelancing work बोलते हैं, या ये बोलते हैं कि हाँ मैं तो part time कर रहा हूँ या कर रही हूँ. So I have met a lot of people who say that, and the same perception was put on to me कि अच्छा ये तो पार्ट टाइम है ना, अच्छा ये तो टेम्पररी है ना. सो दैट काइंड ऑफ अ स्टफ वाज समवेयर ट्रबलिंग मी, एंड आई वाज लाइक नहीं, ये टेम्पररी नहीं है. अब व्हेन आई हैव गिवन 2 years to something, I will not leave that. So a thought came that I should not leave that, and therefore I continued with this business journey, and then I started training people on the same thing, coaching them. So they came to me with the thought कि आप कैसे घर से सब मैनेज कर रहे हो, how are things happening. फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने 6 months ही निकाले होंगे, 8 या 9 months ही निकाले होंगे कि we saw corona and all that stuff happened. First program failed, everything was there, हमारे कबर्ड में रखा हुआ था पूरा स्टॉक. We were a training company back then, तो हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग्स लेते थे, एंड हमारा फर्स्ट मास ट्रेनिंग जो था 300 टीचर्स का, दैट फेल्ड. तो सारे ब्रोशर्स एंड रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबकी तैयारी हो गई थी. यहाँ 22nd को हमारा प्रोग्राम है, 28th को लॉकडाउन. So it was that kind of a situation, and coming from 2 loss facing businesses to making 3 profitable ones and leading the 4th one with Aakash. So this has been a journey, and it's not been alone. It has been definitely with my mentors, because वहां से मुझे बहुत energy मिलती है and the right direction मिलता है, strategies मिलती है to work ahead. So I am always grateful to them. So this book writing came was somewhere कि लिखना है, 2021 से लेके था that I had to write. And once I was talking to my mentor saying in 2021, December 2021 की बात है, अभी मैंने कुछ दिन पहले ही chats revise किए, तो I just came to know, oh, like 1 साल हो गया उस बात को. So 2 साल हो गए in fact. So that time I was talking to him and I was saying कि I need someone who can, you know, guide me to write a book. And he was like कि the best person who can guide you is you yourself. Like first you need to convince yourself to write. So if you can't convince yourself, no one will be able to help you. So I said okay, but then I have so many topics, what to write, etc, etc. And somehow बातें चल रही थी between me and my mentor, but there was no conclusion coming. I was writing many manuscripts, but सब fail हो रहा था. And ultimately it so happened last year in December 2022 that I had a major health issue where I lost my eyesight. So it was actually COVID, but हमें पता नहीं चला that it was COVID. I thought that it's viral. I took it as viral, and उस टाइम पे हो रहा था that the virus was affecting your eye areas. ये cases जो थे गुजरात में बहुत थे, but मुंबई में इतने known नहीं थे. So we didn't come to know about it. And somehow हमें वो पता ही नहीं चला that because of that virus all these things are happening. And suddenly I started like eyes red on and all that started, and I lost my eyesight in 15 days, where day and night was equal to me. So coming from there, where the doctor said कि you can't see, आपका एक eye defective हो गया and all that stuff. Ultimately we got a good doctor from Leelavati, and somehow I could come back from that stage. He was able to recover me in a few months. But then medications were still on, and there was quite a depressing phase. क्योंकि आप इतने struggle के बाद, when you are leading something, and that time all my 3 businesses were flourishing like anything. Like we were getting good leads, business आ रहा था, we were happy, we were thinking of trying to grow our team. So everything was going very well. And when suddenly this thing happened, so like my pillars, like I myself went down. So when I went down, मेरा business भी नीचे चले गए. And it so happened that now there was no point of motivation. So I've normally seen people writing books in silent places, या लोग अपनी फीलिंग्स के लिए बुक लिखते हैं, लेकिन मैंने वो डिप्रेशन फेज से बाहर आने के लिए बुक लिखी थी. So some of the things that I wrote was about my story, but some of the things, the major thing that I did was I interviewed more than 100 entrepreneurs in and around India, where I tried to find what they are doing in their business. So that was the source of inspiration that I took from them कि आपने क्या किया, you tell your story. And I used to ask a lot of questions to them. They used to sit 1 hours with me. I have some of the recordings as well. कुछ लोगों ने allow किया face दिखाने के लिए, कुछ लोगों ने नहीं किया. So in all, the whole collection came out to be this book. So, and I'm fortunate enough that today this book is not only
a point where people come to know about the secrets of the business. But I think solo entrepreneurship is more about जो एक गैप है, जैसे अभी आप लोग पेरेंटिंग के गैप की बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारा हम पेरेंटिंग की बात कर रहे थे कि पहले जमाने में ऐसा था तो पेरेंटिंग डिफरेंट थी. सेम वे अगर हम पेरेंटिंग, एजुकेशन और बाकी चीजों को भी कंसिडर करते हैं, सिमिलरली बिजनेस हैज आल्सो बिकम डिफरेंट नाउ. इट इज मोर डिजिटलाइज्ड, पीपल कैन वर्क सोलो टू अ सर्टेन लिमिट. तो ये सब जो चीजें जो चेंज हो गई है, इस चेंज को बोलने के लिए कोई नहीं था सामने. So I just told my mentor, मैंने कहा, he himself is a business coach. Some of you might know him. He's Rajiv Talreja. And I just told him, I said, whatever you are teaching, I'm not negating that. But then everything is about कि ये बड़ा कर लो, बड़ा कर लो. But then from where to start? Where is the scratch? So then he said, you find the scratch. And if you have it, then you tell. So I said, okay. And then I started this journey of being like helping solo entrepreneurs. So that's how like this whole thing started, and that's where my book is concentrated, to bridge this gap between from modernization of businesses, from traditional businesses to the modernization of businesses. So that's something that I have tried to do, that how this gap can be closed down, and how solo entrepreneurs actually need to work to create a sustainable business for long. So these are the crucial elements of my book, and I've been fortunate enough कि I have got quite a lot of good reviews, and people have not only like somewhere when I sent my books to my mentors and I told them कि like I just need a few words, but I got full 2 minutes videos from them. So that was the kind of response that I got. And still, whenever I share this book with people, they get certain elements to implement in their business. So that's the best part from me. So you cannot implement everything, but whatever you can, just take that and move ahead. That's life. So that's all from my side. The book is available on Amazon, and any one of you who's watching this video right now, or like maybe later in future, can check it out on Amazon and take a copy for yourself. Thank you. Yes, thank you. Your thoughts, your story. So congratulations you also. तो आप सभी को पता है, आप सभी मतलब कोर टीम से है, सभी लोग जुड़े हैं, तो आप सभी को पता है कि कैसे वो हेल्प करते हैं बिजनेसेस को. और डेफिनेटली ये बुक का बहुत ज़्यादा फायदा होगा अगर कोई सोलो एंटरप्रेन्योर है जो खुद से अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ नया स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बुक परचेस कीजिए. अमेजोन पे अवेलेबल है ई बुक पेपर पैक फॉर्म में, और आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है. और thank you once again for giving us opportunity to serve. और उनके बारे में भी कुछ बताना चाहूँगा, क्योंकि सबके बारे में बता रहा हूँ. तो देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं आप सभी के साथ में, जो ना आपको कभी भी मतलब ऐसा लूज नहीं छोड़ेंगे. वो जो है जिनके साथ हम कनेक्ट होते हैं ना, तो मैं थोड़ा पर्सनली बताना चाहूँगा. जब साक्षी मैम से हम अगस्त के इवेंट से थोड़ा ज़्यादा काम करना शुरू किया था, उससे पहले भी कनेक्टेड थे. और जब स्टार्टिंग वाली बात बताता था, जब हम फर्स्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले थे, तो उनका बुक भी उस वर्ल्ड रिकॉर्ड का पार्ट बनने वाला था. पर उनका जब आई का प्रॉब्लम हुआ था, तो वो टाइम पे कुछ 6-7 दिन पहले उन्होंने फोन करके बताया था कि यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो तुम देख लो भाई अभी क्या हो सकता है. तो वो टाइम पे फिर हम ऑलरेडी मैनेज तो हुआ था बाय गॉड्स ग्रेस, बहुत अच्छे लोग मिले, तो वो सब मैनेज तो होता था. पर वो जो बात उन्होंने बताई थी कि हाँ अभी इन्फॉर्म करके रखते हैं अगर हो सकता है, तो वो टाइम पे भी उनके अंदर इतना विल पावर था कि उन्होंने ये बोला था. मुझे अभी भी याद है, मतलब वो फोन कॉल में कहाँ पे खड़ा था वो भी मुझे पता है, मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ उसको कि मैं कहाँ पे खड़ा था और उन्होंने कब बताया था. उन्होंने बोला था कि देख लो अगर होता है, नहीं तो फिर भी मैं ट्राई करूंगी. तो वो टाइम पे उनके जब आई साइट्स का प्रॉब्लम था, फिर भी अगर वो इतना कुछ करने के लिए रेडी थे, तो वो एक इंस्पिरेशन. मतलब ऐसे कुछ इंसिडेंट्स होते हैं ना, जो आपको अगर कभी जिंदगी में प्रॉब्लम आए ना, तो ऐसे इंसिडेंट्स को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका नेगेटिविटी कम हो जाएगा, आप ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो जाएंगे. तो ऐसे इंस्पायर लोग, बड़े बड़े लोग अगर एबीसीडी के साथ है, तो डेफिनेटली बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई
मतलब तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छा चलता है। कि एक सर का फोन आया था मुझे, बोले सर आप तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, बहुत नोट छाप रहे हैं। बोले नोट ऐसा कुछ नहीं है। बोले क्यों, ऐसा क्यों आपको लगता है? ऐसे तो कोई बिजनेस नहीं हो रहा, हम तो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में ज्यादा बिलीव करते हैं। पहले नहीं नहीं, आप तो हमेशा कुछ ना कुछ कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, इतना खुश रहते हैं, हमेशा हंसते रहते हैं। बोले हमेशा हंसते रहते, वो मेरा स्वभाव है। और ये इवेंट्स वगैरह होते हैं, ये हमारे साथ जो मेंटर्स है, जो टीम है, उन लोगों की वजह से सब कुछ होता है। तो मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो उन लोगों से इंस्पायर होता हूँ ताकि और ज्यादा कुछ बड़ा करने की कोशिश करें। तो ऑफ कोर्स ऐसे अगर अच्छे लोग, अच्छे लोगों से हम कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली हम भी लाइफ में कुछ अलग कर सकते हैं। और फिर से एक बार बताना चाहूंगा, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप में आना चाहते हैं, बिजनेसेस करना चाहते हैं, तो प्लीज साक्षी मैम का बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, तो उसको भी परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। और लेट्स मूव अहेड। और एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी, एक और सक्सेस स्टोरी को सुनते हैं। सो ओवर टू यू मैम। Sakshi, I'll call you Sakshi only, and I'm really very happy to have you here, to know you actually. मेरे को तुम्हारी जो clarity of thoughts है, it actually holds me with you constantly, because something I appreciate too much about you is the clarity, right? And secondly, at this age, with a child at home, if you can write a book, then I think I should be ashamed of myself now, and I should also start doing something. So you will be my inspiration, including Aakash. And thank you so much. We will definitely go through it, and we'll try to absorb it as much as possible for us. Thank you so much. Thank you so much, everyone. There's just one small thing that I would like to say. Ki Aakash, like just now told ki, like, you know, there have been people जो आकाश के साथ हैं, बट देन देयर इज ऑल्सो वन पर्टिकुलर थिंग. कोई भी आपके साथ, मतलब यहाँ पे ये किसी के साथ भी एक्सपीरियंस हो सकता है कि कोई भी आपके साथ तभी जुड़ा रहता है जब वो आपके अंदर वो चीज कंटिन्यूअसली देखता है. सो लाइक यू नो, दिस आकाश ऑल्सो डजंट नोस, बट आकाश से पहले आई हैड गॉट 2-3 अपॉर्चुनिटीज वेयर पीपल वांटेड मी टू बी द एडवाइजर, बट बीइंग एडवाइजर रोल इज नॉट समवेयर जहां आपको गेम खेलने हैं. इट्स नॉट लाइक कि आप एक एक छोटी सी चीज देके छोड़ दोगे. नो, इट्स a responsibility where you need to lead. So with people who are not convinced in themselves कि वो लोग खुद कर पाएंगे, उनके साथ काम करना is like breaking your head against a wall. Frankly speaking, I'm very frank against that. So with Aakash I started working because उसमें वो conviction है, था और है, and I pray कि आगे भी रहे, and he doesn't loses on whatever happens in life, because ups and downs are a part. We are seeing a up, that doesn't mean कि कभी फॉल नहीं आएगा या कभी कुछ होगा ही नहीं. So it's just a part, ऊपर नीचे होता रहता है, but then the kind of conviction that he has, that has actually helped me to be with him. Otherwise, frankly speaking, as you said, ma'am, abhi ki, like, she is very clear. So I am also very clear in maintaining that relationship with people. Ki who's that person that can actually work around? So I normally check that while working, and it actually helps you, because अगर आप gel up नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप किसी भी तरीके से help नहीं कर सकते, whether it be your personal or professional relations. So you have to find that person with whom you can get connected and who's convicted. So definitely with Aakash, I think that's one thing कि उसका जो conviction है, जो dedication है चीजों को आगे लेके जाने का, like whenever you ask him कि Aakash what's the next thing, he has the next plan to do. So that's the best part, because if you are blank फिर आपकी कोई मदद नहीं कर सकता. But if you are coming up with something that shows कि नहीं भाई, you are looking forward for something big. So thank you Aakash for whatever you are doing, and keep doing. All the best. Many more years to go. Again here, Sakshi, I truly I'm with you in this. I believe the same about Aakash. His conviction, his generosity, his capability of networking, his creativity, everything attracts me. I am 56 right now. I'm 30 years elder to him, more than twice his age, and he is an inspiration for me too. So thank you, Aakash, for being as you are. You are inspiration for us. Thank you. And now I will invite Madam Sonesh Bharadwaj to tell about herself and her achievements. Thank you so much. I think I'm audible to everyone.
First Yeah, of you all, are. very lovely good evening to all of you. I'm joining all of you from Bangalore, and my sincere apologies to all of you to be late here because I was traveling back to home. So I dropped a message to Akash that I'll be slightly late. So, well, I think it was great hearing, though one or two members only I was able to just hear so far, and it was so amazing to hear. So, my name is Sunesh Bhardwaj, and professionally, if you ask me, I'm an engineer, electronics and telecommunication engineer. And post that, I started my corporate journey working with various corporates for the last 18 years. I'm basically a leadership coach. So a certified life coach, business coach, and majorly I am into a lot of when it comes to customizing the programs, whether it is for corporates, individual entrepreneurs, or it is coming for universities. My specialization comes into that, and sales and marketing being my key forte. So that's something which I keep on training various company leaders on as per the requirement. In short, if I have to tell you, I'm a global motivational speaker, being a part of a lot of platforms where I just go and address a lot of people with whatever the help I can provide in terms of life coaching. Certified TTT trainer, a certified life coach, leadership coach, and a sales expert, an author as well as an entrepreneur. And most important thing is, when it comes to life coaching, now a lot of people feel that in life, whatever we call it as a success has a very different meaning for each one of us. For some people, success might be like having a huge bank account, can be bank balance can be their success. For some people, just getting a name fame can be your success. For some people, just going and doing something on social ground which makes them feel happy can be a success. So success has very different parameters, and the book, why I have written my book called Magical Codes of Life, basically puts that light on that why we are there on this particular planet, and as a human what we do with our life is very very important to understand. Because all of us right now, we are running a rat race. Some people are running into business coaching, some people are into business, some people are into jobs, some people are probably just into their family life. So we all have some and the other thing in life to run behind. But the most important thing is, do we understand as an individual how much we have understood ourselves as an individual is very very important. Because today, no matter what, whatever business you do, wherever you work, that's something you are doing for your living, and which is pretty much required. There's nothing wrong about it. We all have our own expertise level, we all have our own way of earning our bread and butter, and it's absolutely fine. But then there is a second component to that, is something called life. Are we taking care apart from that segment of our life is very very important. In that, what it comes, how is our social behavior, how much we value ourselves, are we upgrading and upskilling ourselves through various people or not, is very very important. So my this book called Magical Codes of Life has thrown a life on people knowing themselves much better from inner side, rather than just portraying and projecting yourself onto the outer sphere, how people receives you. Because I'm a firm believer, if you are beautiful from inside, I think you are inside out complete beautiful individual soul. But how we do justify this soul, that's very important. Do we have the right self confidence? Do we have the right self esteem? Do we understood spiritually how much we are grounded? Because today all these areas are interrelated to us. And as a human, if we don't create a right balance between our professional, social, personal life and relationships, I think there is going to be a big massive problem. And how many of you agree to this point that we all today have, no matter what, how good we all are suffering in one and the other area of our life? Whether it is professional, whether it is relationship, whether it is personal, even the kind of relationship you have with yourself can be also turmoil. So this book actually opens up your mind that when you talk about you as an individual, who you are, point number one. Point number two, how you should be actually become very, very enlightened from your soul inside.
what are the areas we all can work, irrespective of whichever profession we work for. Because when I used to work for corporates full time, I always used to get complaint from corporate individuals, Sunesh, we don't have time to work on all these areas. And today I feel myself very fortunate because I am able to create the kind of lifestyle I wanted to be for myself, whether it is professional, personal, social. In all the areas I wanted to slightly balance myself. Now, balancing for me was never like 50-50% I will be achieving everywhere. No. Balancing means, am I able to at least give 20% to that segment which I planned off? That's very, very important. So all I'm trying to say, it's sometimes we try to give ourselves a smart excuse of not doing the things in the right way. If we start giving ourselves own time, like I especially seen my female entrepreneurs whom I coach, they always come and tell, Sunesh, we have family, I'm not able to give my time to my kids, to my husband, to my in-laws. I said, you understand one thing, even you need yourself as your own me time. Where is your me time is there? Have you counted even that me time? Then she says, no, we don't have that much because we have other kind of commitments also to fulfill. So as a lady, I understand, because we always think first our priorities dedicated to our families. But at the same time, if we are not able to maintain ourselves, if we are not able to feel very happy from inside, do you feel you'll be able to take care of rest of the people around you? I think no. So we should not create that injustice. Somewhere we need to understand, especially the female part of this entire beautiful life gamut needs to be empowered more thoroughly. Today we talk about empowerment. I always ask people, what is there that you want to empower a lady on? She's already empowered soul. All she need to understand is her rights in the right meaning. Today, everywhere we find female power is coming. So don't misguide them, mislead them, saying that, hey, we are empowering. You're not empowering. Just simply they are not aware about their own rights is something they need to know. They are already empowered soul, because there is nothing without them, isn't it? When we talk about Shakti, when we talk about Shiv Shakti as a together component, these two power has been created on this particularly planet to create some miracle in the right format. Only Shiv can't create everything and Shakti can't create everything. It's all just a matter of understanding. And what you're trying to play around, you say, oh, okay, one power is not empowered, I will empower. What are you going to empower? There is nothing about it. We are already empowered soul. You need to just give them their rights, and they need to understand their rights in an appropriate manner. They should free themselves from arrogance. They need to free themselves from egoistic kind of attitude, which actually puts a lot of barrier in their life. Now, this is equally applicable even to male counterparts, because you must have seen a lot of people who are carried away with a lot of things. Right now, once we balance all these elements in our life, I think we become a beautiful soul. And this is what my book is all about. Today, everything has been created for a reason on this planet. The color you choose, the lifestyle you choose, the way you think, the way you behave, the way you take action, everything is directly proportional to your thought process. Whosoever is today, you are not because of anybody else, but because of you. So you need to first respect yourself in a beautiful manner, and then you have to become slightly enhanced version of yourself, because the journey of coming on this planet is enhanced, becoming the better and better version of we ourselves first, so that we can help others to radiate the same positivity into the most amazing manner, and we can make people feel more positive around us. See, once you become empowered, don't you feel so you have the right power to go and help out people and uplift people? I rather use a word called uplifting people rather than helping people. We are nobody to help. I think we are someone who can uplift people. That's the right word. And if God has blessed you with some sort of mental creativity, or let's say you have been blessed in some and the other way, because we all have been blessed in some and the other way, we need to figure out, and then from there we need to just go and start uplifting the society in whatever best possible way we can. It can be through your education,
It can be through your monetary funds. It can be through just going and supporting emotionally people. It can be through mental health programs. There are n number of areas we can go and help. My area, I found during COVID that probably education is my very strongest area where I can help guide people through my education, knowledge, and experience. That's what exactly I did. And I'm still going to continue the same. So my particular learnings in this journey is all about that only work will not help you. You are a complete blessed soul in you yourself. Just don't enjoy a half part of your life. Before we leave this planet, I think we should feel very fulfilled in ourselves. And that we can only do when we are balanced in our all the spheres of life. So don't compromise on your own me time. Don't compromise on your shopping time. Don't compromise on your kids time. Go and enjoy. That's your life. Think like this is one life and you have one day. Each day is unique in itself. This is how I enjoy, and I make people also to do the same thing who are around me. So overall, if you have to ask me, this book, basically I have written this book because a lot of my mentees, my students, because I deal with a lot of different crowd set during my coaching programs. I have the crowd set right from university graduate engineering students, management students, then corporate leaders from all the levels of level 1 to level 4. Then I have business entrepreneurs. Then I have social activists with whom I interact with all the premium profiles. Whether they are official government officials or non-officials, doesn't matter. All that matters is they're in some sort of job profiles. So when I interacted with all of them, I have only learned one thing, that we all have progressively gone through our own journey. And it is so beautiful to learn from each other in one and the other way. It's just your mindset has to be open. Don't block your energies. Now, I think ma'am was mentioning that Aakash is an inspiration because that was mindset of Aakash that, hey, I wanted to create something. When I started coaching, a lot of people tell me, hey, coaching is, it's a game of lot of experience. According to me, your age will not give you an experience only. Please understand, your work will give you experience. So I just counter attack this particular statement when people say, hey, people who are into 40 years of industry experience or 60 years of experience can only get into this. I said, no, don't talk about all this. People who have handled majority of the cases working with people on ground level are the right coaches. It's just not about coaching as a title or a coach as a title because you are very fantasized about it. Right? Your work talk volumes, and please work on your actions, because when you are action oriented leader, people know you who you are. Right? That's the power of going and changing life. So our life empowerment, our life uplifting, or changing anyone or right from only you as an individual soul is very, very important. And I think that's how which made me to write this particular book. And currently, yes, I do have a plan to come down with my second book, but just due to time constraint, probably it's taking a lot of time for me to come down with my second. And I keep writing journals and I keep sharing my topics which can help people in terms of their maintaining their mental health, physical health, or any kind of emotional blocks, because that's very, very important part of life. So this is all from my side. Aakash, if you want to have any specific question, please feel free to ask. No, ma'am. Thank you for sharing the wonderful thoughts and your journey. So definitely मैम का बुक भी Amazon पे अवेलेबल है, जिनको भी इंटरेस्ट है डेफिनेटली वो ले सकते हैं. अभी ये यहाँ पे तो सभी अपने लोग हैं, पर इन फ्यूचर ये वीडियो, ये लाइव इवेंट काफी सारे लोग देखेंगे, तो वो भी डेफिनेटली वो बुक को ऑर्डर कर सकते हैं और वहाँ से कुछ हम लाइफ के बारे में सीखेंगे. तो डेफिनेटली कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं ना, कुछ ऐसे लॉज होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ ऐसे थॉट्स जो हमें लाइफ लॉन्ग चलाते हैं. तो एक और थॉट मैं सिर्फ बताना चाहूंगा, जैसे हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ना, गीता पढ़ते हैं और वो बहुत बार पढ़ा है उन्होंने, 20, 25, 50, 100 बार, फिर भी उनके अंदर के जो ब्लॉकेजेस है वो निकलते नहीं, क्योंकि सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता है. अगर हम पढ़े और उसमें से दिया हुआ एक थॉट, एक प्रिंसिपल, एक लॉ को अगर हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें ना, तो बहुत सारे मिरेकल्स हो सकते हैं, चाहे एक बार भी कोई किताब पढ़े.
तो ऐसे ही कुछ किताबें है, भगवत गीता है, अगर हम सच में पढ़ना चाहते हैं, भगवान ने जो प्रिंसिपल्स बताए हैं, अगर हम प्रिंसिपल्स को सच में फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है, आई रियली एक्सपीरियंस दैट, और बहुत अच्छा लगता है जब हम प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। तो डेफिनेटली बुक्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और सोनेश मैम के बारे में बताना चाहूंगा कि हम जब एबीसीडी इंटरनेशनल स्टार्ट हुआ था तो उन्होंने सेकंड सेशन कंडक्ट किया था जो फ्री हम लोगों के लिए करते थे, और तब से हम जुड़े हैं। तो डेफिनेटली सोनेश मैम काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल्स को हेल्प करते हैं उनके लाइफ में, उनके बिजनेस में। तो अगर आपको भी कुछ लगता है कि हाँ कुछ उनसे लाइफ के रिलेटेड सीख सकते हैं, बिजनेस के रिलेटेड सीख सकते हैं, तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनका बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और अब तक हमारे साथ है तो डेफिनेटली इन फ्यूचर भी हमारे साथ रहेंगे। तो मैं आशा करता हूँ उनका सेकंड बुक भी एबीसीडी से, भाबड़ इंटरनेशनल पब्लिकेशन से पब्लिश हो, और वो मैक्सिमम ऑथर्स को भी सपोर्ट करे, उनके मेंटीज को सपोर्ट करे वो उनकी ऑथोरिटी क्रिएट करने में। सो थैंक यू वंस अगेन मैम फॉर ज्वाइनिंग। और एक और चीज यहाँ पे मेंशन करूंगा कि सुबह मैम का हम काफी टाइम से वेट कर रहे हैं, तो सॉरी मैम आपका मिस किया, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिस्ट बनाया था, पर शायद मैं टाइपिंग में मिस कर गया। पर वेलकम यू, क्योंकि मैं जिस टाइम से बार बार बोल रहा था कि इंस्पिरेशनल स्टोरी एक और हम उनके बारे में जानेंगे। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर सुबा मुखर्जी मैम। एंड ओवर टू यू मैम। Sir, just I want to interrupt in between. Sonesh ma'am, when it is an online session, na, Yes. we people, what we do maximum times, we just turn off the cameras and then just keep on listening. Right. Clear? Right. Or means we are busy in our work. Right. Even I did for a like, because I came from somewhere and I was having another session because I'm doing that career counseling. Right. But the moment I heard that, na, like when you started with this Right. empowered word, even I used to do it. Like when we talk about our work, we say, okay, fine, we empower, we help people empowering. But yes, this is a life lesson for me also. We are already empowered. We cannot help anybody to empower. Very so true. like great listening to you. It Thank is you. like every time, that is what I'm saying na, ki when somebody has that power to attract people while speaking, right, that is a great achievement of ours. That day Very, Ritu very ma'am, true. she was wonderful. So like sometimes what we say, okay fine, people are speaking, we know everything, okay ये तो सुना हुआ है, but जब कभी लगता है ना कि कुछ नया आया तो बड़ा प्यारा लगा। मतलब आपने जो आज बोला है ना, लिटरली कि we have to take out, we know yes me time होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत सारे restrictions होते हैं, but we have to, we are trying. But yes, but this statement of yours will be like a lifelong lesson for me कि everybody is already empowered, we cannot empower anyone. One most important thing I just want to add, I'll just take 1 minute, Aakash, if I do have a permission. Just 1 minute. Yes. I'll just cut it short, because usually as females we always feel ki we are abided and we are so much having a rules and regulation around us. Let me tell you, the society is not that bad, how much we see it as a bad. Okay, once we create our own stand, you know how to speak for your own rights. Let me tell you, everyone is going to support you. Because see, it's just the mindset which we have given to people that ladies have always been pressed, depressed, and they have been always socially tortured. It is just because we give them that authority of doing such kind of things. The moment you start realizing that this is not something you're meant for it, I never tell people go and become abusive like others. No, that is absolutely not the way. You're well matured, you're well, I would say you're well self-balanced person. When you become self-balanced, you have a complete power to go and object whatever you want in your life, and you can attract the right people. See, always remember, a lot of people ask me relationship coaching when I do with people. They say, I want that girl, I want that boy in my life. I say, first stop talking about all this. Just become like who you want in your life. The moment you become what you want in life, you never ever crib about things, because you will start attracting only that positive things around you which you wanting them. And always remember, सीता जी हमेशा श्री राम जी को इसलिए मिली थी क्योंकि श्री राम जी ही उनको डिजर्व करते थे. सीता कभी भी किसी और दूसरे के पास नहीं जा सकती, isn't it? तो आप अगर अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं श्री राम हूं और मुझे कोई सीता जैसी ही चाहिए, तो उसके लिए पहले आपको श्री राम बनना पड़ेगा. You can't expect you are nobody and then you are expecting I want a wife like सीता जी.
That's not going to happen. Let's have a very realistic expectation and try to become and fairly deal with humans rather than just getting too much stereotype here and there. It doesn't make sense. So don't trouble too much yourself. Life is beautiful. Life is amazing. Start changing your perception towards people and to with whom you are going to interact. You see miracles in life. That's very, very important. Yes, definitely. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Once again. Yeah, and over to Subha, ma'am. Yeah, welcome, ma'am. Thank you so much, Akashji. First of all, good evening to everyone. I was listening to all the speakers, such firebrand speakers. Mrs. Sunesh, I could see that she is a firebrand leader. She has so much to speak. And it was my pleasure to hear her talking about women empowerment, and they are already empowered and so on. But before I start, I would like to extend my sincere gratitude to Akashji. Out of respect, I call him Akashji. Though by age, he is much younger to me. As Miss Mamta has said, that I am also equal to that age. And I think I am in double to what Akash's age is. But still, with respect, I call him Akashji just because I have found this boy, young boy, when I first met him, this young boy full of dreams, full of planning. And the best thing is that he is helping people to grow. And he is growing, taking people along. So that is what I really appreciate about him. And this first time when I met during this Bombay event, I was very much impressed to see this young entrepreneur working towards success. I met Dr. Ritu Gupta. She inspired me a lot. I met Preeti Saraswat personally, and I met a lot many like Sadika, Sunita ji also I met. I heard her speak. So from there, I got the inspiration to write. Though during pandemic, I was writing something or the other, but the thing is that I never thought of taking a book out. But once I attended Akashji's event, that gave me inspiration when I listened to all the authors and when they spoke about their books. So Miss Soneshi, I met for the first time this through the online platform only, but I must say what a wonderful speaker she is. She went on speaking, and I really enjoyed the entire moment. Right. Okay. To speak about my book, I would like to say, as Mr. Sonesh said, that you should take out time for yourself. So far, you have heard people talking about that socially useful book they have written. But let me tell you, my book is all about me. During pandemic, everybody just went through different phases of life. Some were good experiences, some were bad, right? So being human being, I also went through various kind of experiences, and that is what I have shared in my book. To tell you about myself, I am basically an educator, teaching senior secondary classes, an author, poet now, just because of Mr. Aakash, who has helped me to publish my first book, which is very dear to me. As Preeti said, I would like to quote her words. And this is all about me, my emotions, what I felt during that time. That is what I have mentioned in this. So here I would like to quote what Dial Thomas has said. A good poem is a construction, a good poem is a contribution to reality. The world is never the same once a good poem has been added to it. So believing that, I have written, and this is a compilation of poems which you will find in my book. See, the thing is that being human being, as I told you, there are various things that we experience, which we watch, and sometimes we keep it to ourselves. We don't share. But here, I have opened my heart to my readers. So during that time, if you are aware of, the Palestinian war was going on. So when I saw that war, the way people were killed, and you can say it was a very painful experience for me, and I wrote a poem on it, which I would like to read out. I would like to share with you. Rest you are going to find in my book, but I want to read this poem to just give an idea how I expressed myself.
Right. As I title it, brutality. Never have I seen such a brutal massacre, where men are murdered and women are dragged, where humanity cried, but it went unheard. Whether Afghanistan, Pakistan, or Khalistan, should humanity not be given a better chance to enrich, to augment, or flourish as it wants? Who has given this right to the one to kill the other one? Are we all not part of the Supreme One while waiting outside the trial court where humanity was bashed, trashed, and smashed? No one was brave enough to raise their voice to save the innocent from being killed and destroyed. So, see, in our day to day life, we experience so many things. So, here I just try to bring forth my own feelings, my own emotions. Here I have spoken about a woman begging on the street. When we see beggar, we just shove them away. We don't give them, even prefer to give any kind of, we think that it is, we are promoting begging in the society. But do we ever feel that there might be some kind of need behind it? So this is what I felt. That is what I have expressed in this. Beside that, I have written a poem on daughter. During Daughter's Day, I felt that we talk about Daughter's Day, Mother's Day. There are so many days that we celebrate. On the other hand, what we are doing, we are killing daughters. We are abusing them. So as long as we are not, you can say that we are not taking out some step to stop all these things, we have no right to celebrate those days. Third thing, it's not that all sad moments that I have, you can say, recollected in that poem, but the thing is that some beautiful moments are also you can find. Like it was a rainy day and I saw that how beautiful. Many poets have written about rain, but I found the rain is a very beautiful part of nature, which one should appreciate and enjoy. So what I felt, I have written about that. So as I told you that I have written about, it was all about me and my feelings. Once you read it, I think you will be able to relate to those feelings. That is why I will request everyone to go through it and share their experiences, how they felt. And even criticisms are also welcome because naturally they help a person to grow. So here you will find all that my love for nation, my love for nature, my observation about the world. So various aspects that I have mentioned in this poem. So it is available on Amazon.com. I would request everyone to go through that. I will share that link also in the group for you to easily find it out. And that's all about my book. I don't have much to say. Please go through it and share your you can feedback with me. I will be that will be really grateful. Thank you so much. Thank you, Aakash ji, for giving me this opportunity to speak about my book. I've seen various publishers, but you are the only publisher who has arranged this kind of session to promote, to help authors to promote their books. Thank you so much. Thank you, Ritu ma'am. Thank you, Rekha ma'am, Mamta ma'am. And I am really still learning. And Sonesh ma'am, I must say you're a very powerful speaker. Thank you. Thank you so much, ma'am. There is so much to learn from you. Thank you. Thank you so much. Thank you, everyone. Thank you. Yes, thank you once again, ma'am, for giving us opportunity. और ऐसा कुछ नहीं कि it's I am just a medium. मैं मतलब उस विजन पे, मिशन पे हम सब मिलके काम कर रहे हैं. तो अब सभी है, इसलिए वो सब कुछ चीजें हैं. तो डेफिनेटली ये तो क्रिएटिविटी ये सब तो है, पर डेफिनेटली हम और ज्यादा बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे. और सभी का सपोर्ट रहा. अगर आज जितने लोग जुड़े थे, अगर ऐसे इनिशिएटिव्स में सब लोग जुड़ते जाएंगे तो डेफिनेटली हम और भी कुछ अलग कर सकते हैं. और यहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स है, कोर टीम मेंबर्स है, लीडर्स है, मेंटर्स है, सभी लोग देखते भी रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रही है. तो वो उस तरीके से प्लान आउट भी करते हैं. तो प्लानिंग में तो काफी सारे लोग हैं
और आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन। और एक और चीज सोनेश मैम के बारे में बताना चाहूंगा, जब आपके बारे में बताने से पहले, शी इज आवर लीड स्पीकर। हम जब हमारा प्रोग्राम होता था 10 डेज का, ट्रेन द ट्रेनर या बिजनेस कोचिंग हो, तो कोई भी प्रोग्राम, अगर कोई कभी कोई स्पीकर ऑन टाइम अवेलेबल नहीं होते थे, उनको बताने से वो इजीली कंडक्ट कर पाते थे। तो उनको कोई ऐसा टाइम तो ऐसा सब कुछ है, काफी दिनों से जुड़े हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए हम सब काम करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करके। ये एबीसीडी का कल्चर भी है, एक दूसरे के साथ हम ग्रो करते हैं, ग्रोइंग टुगेदर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और सुबह मैम के बारे में भी मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने 6 अगस्त के इवेंट में बताया था, मुझे भी नहीं लगा था कि हाँ सच में वो पब्लिश करेंगे, पर उन्होंने वो टाइम पे बताया था कि मैं बुक लिख रही हूँ पोएम से मेरे, और उसको पब्लिश करना है। और आपके बाद फिर हमारा शायद 2-3 दिन बाद कॉल हुआ था, और वो टाइम फिर उन्होंने बताया कि हाँ डेफिनेटली करना है। तो फिर मुझे तब गारंटी आया था, हम क्या कस्टमर ढूंढ रहे थे ना तब तो गारंटी आया कि नहीं हाँ डेफिनेटली होगा। और आयुष और फिर मुझे पता था कि हाँ वो होगा ही। और फिर आयुषी मैम रेगुलर उनके कांटेक्ट में थे, तो डेफिनेटली वो सब चीजें एकदम स्मूथली हुई। और एकमात्र हमारे ऐसे ऑथर है जिन्होंने कुछ भी परेशान नहीं किया, मतलब कभी खुद से ऐसा कुछ ये नहीं किया। उन्होंने हमेशा बोला कि हाँ आपको क्या लगता है वो करो। तो उस तरीके से हमने सब काम किया। तो थैंक यू वंस अगेन। बहुत सारे लोग अच्छे मिलते हैं और इस जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक और ऑथर, you have all the gems in your group, I must say. बिल्कुल handpicked है आपके सारे gems. Perception matters, ma'am. Perception matters. Yes. Because you are a gem, so you can see the gems. Oh, Rekha ma'am, thank you so much. Thank you. You are a lovely person, ma'am, I must say. Thank you so much, ma'am. Thank you. Yeah. So thank you once again. और before listening one more great author, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ममता मैम काफी दिनों से एबीसीडी के साथ, पब्लिकेशन के साथ जुड़े हैं। उनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि वो हमेशा सपोर्ट करने के लिए रेडी रहते। तो आज भी उनको मतलब वो एज अ गेस्ट या उनको फेलिसिटेट करने के लिए इनवाइट करना था, पर उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया कि नहीं मैं आज इवेंट को हम मैनेज करते हैं साथ मिलके। तो मतलब ऐसा अगर कोई है अपने साथ में तो डेफिनेटली हम कुछ अलग क्रिएट कर सकते हैं। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो इवेंट्स हम जो सबमिट्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सबमिट्स कर रहे हैं, तो उसको कैसे हम करने वाले हैं, उनका क्या कैसा कंट्रीब्यूशन रहेगा, किस तरीके से उन्होंने प्लान किया। क्योंकि हम लास्ट दिसंबर एंड में हमने एक छोटा सा मीटिंग किया था और उसमें सब डिसाइड हुआ था, और वहां से लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अलग अलग हर महीने हम कुछ यूनिक टॉपिक्स को लेके, यूनिक थीम्स को लेके सबमिट्स करने वाले हैं। तो लेट्स वेलकम ममता मैम। सो वेलकम मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस अबाउट समिट एंड यू एंड हाउ वी विल ग्रो। और उसके बाद फिर हम आगे इवेंट को आगे लेके जाते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक रितु मैम का एक बार करवा लें क्या? रितु मैम की बुक का भी देख लेते हैं। यस 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 मैम आप पहले बोलिए, आपको भी सुन लेती हूँ, बिकॉज मुझे भी जानना है आपके बारे में। आप सबके बारे में जानते हैं, आप नहीं बोलते हो। आप बोलो, हमारे बारे में सुन लेंगे सब लोग। मैम आप बोलिए, मुझे आपको सुनना है। नहीं, मैं कोई बहुत अलग नहीं हूँ, आप लोगों की तरह ही हूँ, बल्कि आई एम ऑल्सो लर्नर ओनली, एंडलेसली आई लव टू लर्न। My point is, Shubha ma'am, it was actually my skip of list actually. So I'm sorry about it because वो मैं थोड़ा सा वो देखने में हो गया. I got the chance to hear so many wonderful leaders, writers, authors. It is rather I should say that this is my good luck that I got the chance. Thank you so much for giving me this chance to hear all of them. That is a different thing. You are taking it positively. That is really nice of you actually, because I was feeling bad about it basically. Why please don't. And about me, I'm one of you only. It's the same almost. I had been an educator for a long time, but then
Since 2014, I have started with my own counseling platform, and I am a life coach, basically dealing with all the soft skills, as well as I'm an expert with psychotherapy with the youngsters, basically. So I could relate to most of the books which were discussed over here on parenting as well as on toddlers, because these are the things which are very much required. Apart from this, I'm working for environmental reforms as well as for gender equality. Gender sensitivity is my expertise. So we take workshops on basically working, like I should say, working experiences with the gender equalities, basically. We do it that way. So we go to institutions and we go to other places for in the corporates, etc. We conduct workshops on enhancing gender sensitivity issues as well as on environmental reforms. We have got a curriculum which is based on gender equality as well as environmental reforms. So we do this, and I'm with Aakash then now, because there's a lot of things. So what he does has been my arena of interest also, and I think till till my life, I feel I could be with ABCD. It seems so. So I enjoy with these ventures, and I am really happy about his success also. Similarly is Ritu ma'am also. She is so young and she's so inspiring. I actually loved her talk when she was talking about in the IBS session. We completed a session on breakthroughs in January, which was from 27th to 29th of January. And we started with this summit. And in this summit, actually, 16 or 17 speakers had spoken on all the 3 days. And basically, we were discussing about the breakdowns occurring in the life and how to get out of the breakdowns and find your own breakthroughs. So since it was all related to the handling of emotions, self emotions, as well as emotions of the surrounding, how to make yourself compatible. So a lot of skills were discussed by the speakers in that summit. And it was really very much enlightening. We learned how to learn, basically. And so many life skills like empathy was given a huge importance in that, as well as I remember, as much as I remember, emotional quotients were discussed, all, and how to handle with your emotions were discussed. A lot of life skills were discussed. So it was a very enlightening session, and we really enjoyed learning with all these speakers. And as per the ABCD planning, we know that in every month we'll be doing something new. And as Aakash is an expert, and I always tell him he creates magic with logic. So he has a logic to create magic in 2023 also. And we are with him with his logics. We agree to it actually, and we would want to be a part of his magics. So this was our first summit, and it was really successful, and many people appreciated also. The speakers were enlightening. They were they had a very clear vision they were speaking, and we all enjoyed. So now I actually bring Ritu ma'am on this platform to talk. Yeah. Good evening, everybody. Namaskar. First of all, I'll definitely like to thank universe, thanks the universe to means connect me with so many good souls. अभी जैसे मैम ने कहा कि आप जैसे बनोगे आप वैसे अट्रैक्ट करोगे, सो मुझे लगता है शायद मैं कुछ अच्छा मैंने किया होगा तभी इतने अच्छे अच्छे लोग मेरे लाइफ में आ रहे हैं. उनमें से एक आकाश जी हैं, जिनको आई फर्स्ट heard him about him from Sharda ma'am. I was actually looking for a breakthrough in writing so that I could approach the world. So that time Sharda ma'am told me that, Ritu, why don't you join this Amrit Ka Mahotsav? I wanted to do something for the country. I always have a motto and always have a focus कि मैं देश के लिए समाज के लिए जाने से पहले कुछ करूं, छोटा सा ही सही कुछ करूं. तो मुझे शारदा मैम ने बताया कि आप इसको ज्वाइन करो. तब मैं आकाश जी से मिली. वो भी मेरे छोटे भाई की तरह ही हैं, बट उनको सम्मान इतना करती हूँ कि आकाश जी ही बोलती हूँ.
Like नहीं I छोटा have भाई समझे, it's a great for me also. So my sister doing something great. क्या उससे बड़ी बात क्या है? नहीं sir. So that time I came to know about him, and ever since I have been connected to him. I have been working with him, and कुछ भी हो, ups and downs, flaws, shortcomings सब में होते हैं, मुझ में भी हैं, उनमें भी हैं, but हम भाई बहनों की तरह एक साथ मिलजुल के किसी तरह से हो जाता है हम लोगों का. And I am really very grateful and very positive about him. कि मैं चाहती हूँ कि आगे आगे जैसे उन्होंने हमें वो प्लेटफॉर्म दिया, इज गिवन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू स्पीक अबाउट आवर बुक्स. It's really very honor, means it's a very really honorable means opportunity to come forward on social media, because I'm a very shy person. I'm not too much extrovert. So that way he has given me a platform, given us all a platform to speak about our books. Because बुक्स हम क्यों लिखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, एज द अदर ऑथर्स सेड, एज द रिस्पेक्टेड ऑथर सेज, कि प्रीति मैम ने जैसे बताया कि इंस्पिरेशन, तो इंस्पिरेशन 100%, इंस्पिरेशन कहाँ से? हर एक के लिए अलग अलग वो होते हैं. मेरे लिए मेरी जिंदगी मेरी इंस्पिरेशन है, मेरे लिए मेरे दर्द मेरे इंस्पिरेशन है, मेरे लिए मेरे फेलियर्स मेरे इंस्पिरेशन है. सो आई हैव बीन फ्रॉम अ वेरी big middle class family, joint middle class family, and I was like amongst all the, जैसे middle class family में होती है कि आप अपने लिए कुछ नहीं सोच सकते, जो भी होता है सबके लिए सोचना है, अपनी आइडेंटिटी कुछ नहीं होती है. सो वहां से मुझे बहुत कुछ लेसन्स मिले, जिसके थ्रू मैंने 4 बुक्स लिखे हैं. तो 4 बुक्स में पहला मैंने लिखा अ प्लेस इन द सन, which is about the life skill, A Place in the Sun and the Primrose Isle, which is about the life skills, about the experiences and the lessons of life which we have gone through, which we all have gone through sometime or the other. क्योंकि हम जो कहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें सोल्यूशन पता है, जैसे दूसरे ऑथर्स ने भी कहा कि हमें सोल्यूशन पता होता है, but somehow उस वक्त we just cannot relate to the problem, we just cannot think of a breakthrough, of a solution, because that time our mind is jammed with all the negativities and the negative thoughts that cloud the whole situation. So उस वक्त लगता है, उस वक्त हमसे गलतियां भी होती हैं, हमारे फेलियर्स भी होते हैं. बाद में हमें रियलाइज होता है कि काश उस वक्त हमें ये बता दिया होता किसी ने, पता तो हमें रहता है, तो उस वक्त हमें ये सिचुएशन फेस करना नहीं पड़ता, या आज हमसे वो गलती नहीं होती जो उस वक्त हमसे हो गई थी, जिसका कई बार हम रिपेंट करने से भी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है. सो बिफोर दैट थिंग कम्स इनटू आवर लाइफ, दैट रिपेंटेंस कम्स इनटू आवर लाइफ, आई फील दैट इफ डेफिनेटली, मैं बिलीव करती हूँ कि सबकी लाइफ अलग है. वी ऑल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ एग्जाम पेपर्स. The blueprint of our life is not known to us when we are born. It just emerges as and when we grow up. So that way मैंने कोशिश की है, because I'm attached to several NGOs and several being a educator, being a teacher, being a counselor, मैं काफी लोगों के इंटरेक्शन में आई हूँ, काफी लोगों के मतलब संस्पर्श में आई हूँ, और मुझे जो एक ब्रॉड कैटेगरी लगी, जो मोर और लेस इस समाज में हमारे अंदर, चाहे वो मी टाइम हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स अबाउट टीनेजर्स हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल अबाउट रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो किसी भी एंगल में हो, तो उन सबको मैंने कवर करने की कोशिश की है. उनमें से एक है हिडन पेन, अ सप्रेस्ड पेन, जो मेरी बुक है हश्ड एंग्विश. सर कैन यू प्लीज शेयर दिस ब्लू वन? यस सर, वही वाली, नहीं पहले वाली जी. तो ये जो हश्ड एंग्विश है, ये बुक जो है, ये मैंने लिखी थी साइलेंट पेन के ऊपर, क्योंकि कई बार होता है कि हमें बहुत तकलीफ होती है जो हम कह नहीं पाते हैं. जैसे मैम ने बोला, सोनेश मैम ने, कि एम्पावरमेंट या गर्ल्स को, जैसे सीता जी के एग्जाम्पल उन्होंने दिया, सीता जी के बारे में ही मैंने वहां पे लिखा था. वो मेरी इंस्पिरेशन है शुरू से, कि उनको जो पूरे दर्द से गुजरना पड़ा, उनकी पूरी लाइफ जो अकेलेपन में बिताई, उनकी पूरी लाइफ जो उन्होंने सिर्फ एग्जाम्स देते देते बिताए, जो कुछ हद तक, मैं नहीं बोलूंगी मैं सीता जी हूँ, बट मैं हाँ सीता जी का हिस्सा हूँ, तो वो मेरी लाइफ में भी हुआ. तो वो चीज मेरे अंदर थी, तो उसको मैंने, और भी बहुत से एंगल्स मिले, बहुत से चैप्टर्स मिले, बहुत से अरीनाज मिले, जहाँ पे मुझे साइलेंट पेन के बारे में पता चला, साइलेंस के बारे में पता चला, लोगों के जजमेंट्स, लोगों के वर्जन्स, लोगों के मतलब नेगेटिव थॉट्स, लोगों को इम्प्लीकेशन, कैस्टिगेशंस, गैस लाइटिंग्स, नार्सिसिज्म,
इनसे ऊपर मैंने लिखा एमर प्रॉपर, जो मेरी 4th बुक है एमर प्रॉपर, उसके ऊपर लिखा, बिकॉज ये सारी चीजें जो नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, ये सब कुछ हमें बॉक डाउन करती हैं, वे डाउन करती हैं हमें आगे बढ़ने से। सो फर्स्ट यू हैव टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, जैसे दूसरे ऑथर्स ने भी बोला। तो इस सारे ऑथर्स ने कुछ ना कुछ दिया है, मैंने पूरा सारांश दिया है 4 बुक्स में। तो ये चीज है, मैं चाहूंगी, मुझे फेम, पब्लिसिटी, मुझे अवार्ड्स, इसी सब की कोई लालच नहीं है। जैसे मैम ने कहा, बस मैं चाहती हूँ कि लोग रीच आउट करें, उसको पढ़ें, उसको समझें, उसको इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में, ताकि अगर मैं कॉन्वेंट एडुकेटेड बैकग्राउंड से हूँ, तो वहां पे हमें छोटे से एक बात सिखाई गई थी कि वी आर गिवन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। हमारा पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? बिकॉज मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक और स्पिरिचुअलिटी भी डील मतलब पढ़ती हूँ, मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट है। तो मुझे ये बोला गया था छोटे में कि पर्पस ऑफ लाइफ, जीसस ने बोला है बाइबल में कि टू टच एज मेनी लाइव्स एज यू कैन इन योर लाइफ टाइम टुवर्ड्स पॉजिटिविटी, जो आकाश जी भी कर रहे हैं। तो जितने लाइफ आप टच करोगे पॉजिटिव वे में, जितने लाइफ को आप पॉजिटिव वे में ले जा सकोगे, जो जीसस ने भी किया था, बड़े बड़े महर्षियों ने भी किया है, तो वही आपके जीवन का सार है, वही आपके जीवन की सार्थकता है। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। वरना तो कुत्ता बिल्ली कोई भी जी सकता है। सो दैट इज द रीजन आई वांट टू reach out to the world, so that even if I can change just one life in my lifetime, it'll be the biggest award for me, because payment, royalty, publicity, fame, name, that is okay, that is needed for publicity, but actually that does not count. So just one thing I would say, every author जिसका होता है, हर कोई author इसलिए बनता है, not because we have something to say, not because we want to say something, because we have something to say. So whatever we want to say, we just jot it down, write it down, and reach out to the world. I think that's it. अगर आपकी इजाजत हो, मैं एक छोटा सा poem बोलूं, उसके बाद I'll just wind up. Sir, can I? I've written a poem in this hushed anguish. So hushed anguish में ये poem है, an advice. If there's one piece of advice I would like to give you, is that if there's something you truly wish to do, fight for it till the end, no matter how hard it gets. Better to be a failure than live in regrets. If it's one thing you really yearn, never give up on it, but be stern. It might seem hopeless, it may be a lost game. Never let go of the faith. Be focused on your aim. If you feel like giving up, think about it twice. Will it matter 10 years from now? Pause. Listen to your heart's advice. Will your mind win over and make your heart cry, or make you repent, saying, wish I had given it another try? So definitely this is my motto, this is my mantra, that I never give up. चाहे मैं 1000 बार गिरूं, I'll stand 1001 times. So that is the main thing. So unlearning and learning the Pathshala of life is actually a one-liner from all my books. So that is the thing. I just want to die with dreams, memories. I just don't want to die with my dreams. That is the funda I tell everybody. Do your best. Never think about the result. You have done your best. Thank you so much. Yes, thank you, ma'am, for the wonderful sharing. और आपके books definitely वो Amazon पे भी available है, तो सभी लोग उनको order कर सकते हैं. Amazon so thank you once again for sharing. पे भी है और Kindle में भी है, चारों जगह है. हाँ, Amazon is famous, तो Amazon से कोई भी easily find out कर सकता है. सिर्फ डॉक्टर रितु गुप्ता भी डालेंगे तो आपको उनके बुक्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने शेयर किया था, तो देखिए स्पिरिचुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है. और आप सभी को पता है कि ये जो पब्लिकेशन का सिलसिला तब शुरू हुआ था. ऐसा नहीं कि मैं मेरा थोड़ा बड़ाई कर रहा हूँ, क्योंकि आज का दिन सेलिब्रेशन का है, तो सेलिब्रेशन के हिसाब से अपन डिस्कस करने वाले हैं. लास्ट में आपसे 2-3 मिनट्स लूंगा, फिर बाद में अपन वाइंड अप करते हैं. और आई रिक्वेस्ट ऑल प्लीज स्टार्ट वीडियो. अगर सुनीता मैम, साक्षी मैम कर सकते हैं तो, ऐसा मैंडेटरी नहीं है. और एक और चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैं बिजनेस कोच बनने के लिए इस इंडस्ट्री में आया था, ट्रेनिंग कोचिंग के. तो
मुझे मेरे मेंटर ने बताया था कि आप है ना वो बुक लिखो, तब जाके आपके पास ऑथोरिटी आएगी, फिर आप लोगों को इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो मैंने बुक लिखा, फिर लगा कि नहीं, बुक लिखने से कुछ नहीं होगा, फिर बुक को अच्छे से प्रमोट करेंगे, उसको बिजनेस टूल बना के यूज करेंगे तो इम्पैक्ट होगा। और ऑफ कोर्स वो किया, और आप अभी देख रहे हैं कि 11 मंथ्स में हम बहुत सारी चीजें कुछ कर पाए हैं आप सभी के हेल्प से। तो डेफिनेटली बुक को हमें यूज करना है आगे बढ़ते हुए। तो लिखने वाले बहुत सारे लोग हैं, लिखेंगे, ठीक है। मैं हमेशा वर्कशॉप में ये बोलता हूँ कि अगर आपको हजारों में एक बनना है, हम क्या लड़का लड़की जब ढूंढते हैं शादी के लिए तो बोलते हैं ना घर वाले कि लड़का या लड़की कैसी होनी चाहिए, लाखों में एक होनी चाहिए। तो अगर हमें लाखों में एक बनना है तो हमें किताब लिखना चाहिए, हम भीड़ से आगे आ जाएंगे, राइट। और अगर हमें वो लाखों में ही और एक बनना है तो हमें उस किताब को एज ए बिजनेस टूल बना के यूज करना चाहिए, अपने ब्रांडिंग के लिए, अपने ऑथोरिटी के लिए, अपना एक क्रेडिबिलिटी क्रिएट करने के लिए यूज करना चाहिए। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप शायद बहुत सारे कम लोगों में गिने जाएंगे। और डेफिनेटली हम सब वो एक वे पे है, एक राह पे है, और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक और चीज ये कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, स्पिरिचुअल है, कि भगवान के, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम ऐसा नहीं कि हमें बार बार कोई पढ़ना है या बहुत कुछ पढ़ना है, हम जो पढ़ते हैं ना वो प्रिंसिपल्स को अगर समझेंगे तो लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स आ सकते हैं। तो भगवान कृष्णा हमें बताते हैं गीता में कि सर्वशेषाम हृदय सन्निविष्टो, हम सबके हृदय में भगवान है, या मम वंशी जीव लोके, हम मैं सभी जो जीव है वो मेरे अंश है। भगवान खुद बताते हैं, अगर हम भगवान पे ट्रस्ट करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स पे विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली हम उसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे। अगर सच में, पर ये हमें पूछना चाहिए खुद से कि सच में हम ऐसा फॉलो करते हैं क्या। अगर नहीं भी करते तो कोशिश तो करेंगे, और यही कोशिश को हम बिजनेस में भी लेके आए हैं। तो आप ज्यादातर देखेंगे कि ABCD इज नॉट फॉर मतलब प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस, या ये पब्लिकेशन भी हम ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग नहीं बना रहे। हाँ, ऑफ कोर्स प्रॉफिट बिजनेस है तो प्रॉफिट्स चाहिए, और उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के जैसे चला रहे सब लोग, सोशली हम ग्रो हो, एक दूसरे के साथ मिलके ग्रो हो, एक दूसरे को हेल्प करें। और डेफिनेटली आप सब लोग साथ में रहेंगे, आगे चल के हेल्प करेंगे, और इसी आशा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और सबसे बड़े आशावादी कौन थे, अगर मैं आपको पूछूंगा तो शायद आप लोग अलग अलग आंसर्स देंगे, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। सबसे बड़े आशावादी कौन थे? क्या आप एक दो लोग बता सकते हैं क्या आपके अकॉर्डिंग सबसे बड़े आशावादी? इंसान में हमेशा आशावादी रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। कोई? आकाश जी, ऑल लीडर्स वर होपफुल। जहाँ तो, पर होप पर नहीं फिर होती भी वहां पर तो किसी- लाइफ कम्स टू एन एंड। हाँ, सारे ही लीडर्स, आप जिसके भी लीडर की बात करिए, तो सारे ही होपफुल थे, एंड वी ऑल आर आल्सो yes, क्वाइट होपफुल definitely. that we will be able to Yes, grow and with you in with this publication. yes, definitely. और होपफुल हमेशा रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण को अगर अपन देखेंगे ना, सबसे ज्यादा आशावादी वो है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स हमेशा हर एक के जीवन में है। पर भगवान का अगर हम मूर्ति देखे, उनका फोटो देखे, कभी ऐसा लगेगा नहीं कि वो प्रॉब्लम में है। पर प्रॉब्लम से बहुत सारे थे, कितनी बार लोगों से गलतियां हुई, फिर उनको नए प्लान्स बनाने पड़ेंगे, नए लीलाएं करनी पड़ी, तब जाके वो सब कुछ चीजें हुई। इतना बड़ा युद्ध करना पड़ा, गीता बतानी पड़ी, तब जाके। तो अगर हम सच में क्या अपने प्रॉब्लम्स इतने बड़े हैं क्या? नहीं है। और जब भी प्रॉब्लम्स आएंगे ऐसे लोगों से, ऐसे यहाँ पे जितने लोग हैं, यहाँ पे जितने मेंटर्स है, इतने ऑथर्स है, इन लोगों की स्टोरीज से हम बहुत सारी कुछ चीजें सीख सकते हैं, और डेफिनेटली हम अपने लाइफ को बहुत अच्छे से लेके जा सकते हैं। और thank you once again for giving us an opportunity to serve you. Definitely in future बहुत अच्छे से हम काम करेंगे, उसके लिए भगवान की कृपा हमेशा है, आप सभी के आशीर्वाद है, और इसी के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। और किसी को कुछ शेयर करना है? सॉरी, एक और अपने रेखा मैम बाकी है। रेखा मैम हमारे इवेंट के पार्ट थे। शी वाज हेड event head on one particular day. So
वो अभी यहाँ पे है, तो उनको मैं इनवाइट करना चाहूंगा। प्लस मैम आप क्विकली 2 मिनट में शेयर कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Good evening, everyone, and thank you, sir, for giving me this opportunity. Because I also got connected. Ma'am told that when we were having that world records, and I have done my own event with Takashi, sir, and everybody says na ki he is very down to earth. So we found like no shosha, and it is like so simple, so soberly. Events are conducted, and we don't come to know when he comes and when he leaves. So leaves with an impression, comes with a modesty, and that is really very appreciable. And as everybody is saying since long that yes, gems are there, so everybody is a gem. All those who are connected, they have something within, that is why they are here. So we are giving one another support and hope we grow together. And yes, we are connected for a reason, and the reason is our self-inspiration. So we are getting inspired from ourselves, we are getting inspired from the one who is guiding us at each moment. Thank you, Akash sir, for giving me the opportunity to have been a part of you. Thank you so much. थैंक यू मैम। और एक और चीज मैं शेयर करना चाहूंगा, रेखा मैम ने बहुत सारा सपोर्ट किया था जब हम सितंबर में इवेंट कर रहे थे। जयपुर में हमारा इवेंट हुआ था और सब कुछ उनकी वजह से हुआ था। ऑल क्रेडिट टू रेखा मैम। उन्होंने कॉलेज में अरेंजमेंट किया था, स्पीकर्स को इनवाइट किया था। तो जब ऐसे सभी लोग मिलते हैं तो डेफिनेटली कुछ अलग करने की कोशिश होती है। तो आई होप आप सभी कंट्रीब्यूट करते जाइए। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं इन फ्यूचर, आने वाले 2023 में बहुत सारा प्लानिंग किया है। आप सबको एट द एंड एक प्राउड फील होगा कि हाँ सच में हम एबीसीडी के साथ या पब्लिकेशन के साथ जुड़े हैं, हम भी एक पार्ट है। क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जो भी लोग जुड़े एबीसीडी के साथ या पब्लिकेशन के साथ, कोई और पूछे कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं तो आपको भी एक ऐसा लगे कि हाँ मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर, एज ए कोर टीम मेंबर जुड़ा हूँ, तो कुछ अलग हो। और जैसे अभी लोग, हम सब लोगों को जानते हैं, क्रिएटिव है, कुछ नए आइडियाज लेके आते हैं, कुछ अलग करते हैं, तो डेफिनेटली हम इसको और कंटिन्यू करते जाएंगे और बेटर कंट्रीब्यूशन करते जाएंगे और अपने विजन मिशन को एक और आगे लेके जाएंगे। और वैल्यू एडिशन इट्स आर सभी का एक मोटो है। सक्सेस स्टोरीज क्रिएट करना एक मोटो है, तो सब लोग सक्सेस स्टोरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। आप भी सब लोग हमेशा सजेशंस दे सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और मैं हमेशा जिस प्लेटफॉर्म पे, लाइव प्लेटफॉर्म पे भी बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं पे गलती हो रही है, कहीं पे मिस्टेक्स है, कहीं और चेंजेस लाने चाहिए, तो डेफिनेटली मेरा कान पकड़ सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी से छोटा हूँ। और ये मैं सबको बोलता इसलिए हूँ क्योंकि सच में आप लोगों से मुझे सजेशंस चाहिए, सच में आप लोगों से गाइडेंस चाहिए, ताकि हम और बेहतर करते जाए। और डेफिनेटली हम सब साथ मिलकर और बेहतर करेंगे ही। सो थैंक यू ममता मैम फॉर द वंडरफुल मॉडरेशन प्लानिंग। और आप हमेशा सपोर्टिव रहते हैं। इट्स अ इंस्पिरेशन फॉर मी। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ मतलब कोई है जो खुद से सपोर्ट करते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। इट्स रियली ग्रेट फॉर मी। एंड सभी ऑथर्स हमारे वो हमेशा साथ रहते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं। सो थैंक यू ऑल। थैंक यू रेखा मैम एंड थैंक यू साक्षी मैम। साक्षी मैम के बारे में तो बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर द वैल्यू शी एड इन भाबड़ इंटरनेशनल और एबीसीडी, इट्स रियली ग्रेट। और डेफिनेटली हम सब साथ मिलके कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आपके गाइडेंस की भी बहुत जरूरत रहेगी। और सुबह मैम, रितु मैम, थैंक यू। रितु मैम ऑलवेज कनेक्टेड, बट आप भी टीम का हिस्सा बनिए। मैं ये कोशिश करूंगा कि आप भी आइए, आप उस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। आपको आप कंट्रीब्यूट बहुत सारा कर, पर अगर उस इनिशिएटिव के साथ करेंगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे और ये जर्नी को हम बहुत सारे आगे लेके जा सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन। ओके, file. Mamta ma'am, like I would say, like being the eldest, I suppose. You are the eldest in our family. So I feel like आप इतना time लाते कहाँ से हैं? I feel like whenever I'm there, you are like without any movement, giving 100% attention to all and everything. And I feel like यार इस समय कहाँ से आता है? So really, ma'am, hats off to you.
Rekha ma'am, I take Thank you, workshop ma'am. on time management also. मैम वही तो नहीं आता. नहीं, we will learn from you a lot. So you are an inspiration, I would say. ना लगता है कि हाँ भाई मैम को देखना बनता है. जिस तरीके से कामली बोलते हैं ना, मतलब it's like इतना calm, composed, and it's like यार वर्ड्स ऐसे है ना, आते हैं बस आते चले जाते हैं. No like ups and downs. एक बहुत प्यारा सा the way you speak, it's really like gives somebody a soul, I would say. True. Thank you so much. सुबह मैम, it seems like वो पीछे जो पिक्चर है ना, उसका अगर नीचे का पार्ट देखेंगे ना, तो it is like माधुरी दीक्षित. If you can observe it, check it out, really it is like that. ऊपर का थोड़ा सा वो नीचे का जो है ना, so pretty. Smile. मैम माइक अनम्यूट करिए. सो एक और चीज, जब तक उनका माइक का इशू सॉल्व होता है, अभी हम सब. Thank you so much, Rekha ma'am. I hope I am audible now. Yes. Yes, I just met you on the online only, but I really fell in love with you. You're such an Gratitude. inspiration. You're always appreciating people and motivating rather with your words. Thank you so Thank much. you so much. Thank Very you. true. Ritu Gupta ma'am, thanks a ton. अरे You know, we मैम, keep on interacting. my pleasure. Thank अगर you. मैं किसी की मदद And कर it all सकूं credit या goes to uplift कर Aakash सकूं. ji because he brought us together. Yes, all thanks to Aakash ji. Thank you. Thank you so much. So thank you all. Yes, साक्षी मैम, अब कुछ मैसेज में समझ में नहीं पाया वो actually. नहीं, I was just saying that we are in it together, and definitely सबको congratulations on their books, and we just reach new heights in the coming year. 2023 has just started and there is a lot to go. So करते हैं एक साथ and let's do something together. Sure. Thank you all once again. Thank you for giving us opportunity to serve you, and in future also we will do. Thank you once Thank again. you, everyone, once again. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you. Yeah, thank you.